Yes, guys, welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और आज special night है भाई. It is basically, yes, not a Premier League watch along, not a Chelsea watch along, but back to the Milan watch along क्योंकि it's a big game for people following Serie A. You know that obviously we to have a soft corner big time, और I'm already nervous. आप sense कर दिए होंगे because this is कहीं ना कहीं मतलब एक 6 pointer early है जो अगर मिलान हारती है home ना, you can safely say Milan are out of the reckoning for the Serie A Scudetto race. That's how important it is for Milan. Yes, despite जो हमने cover किया था Milan derby recently, despite winning that recently, it's been hot and cold. Fonseca and I believe there is some bad news about Christian Pulisic not being available. By 3 minutes left for the kickoff. सब लोग जो भी जुड़े, first of all, let's hit that like button. Always a fan channel for all to see. अपना prediction दे दीजिए. मैं lineup दिखाने वाला हूँ in just a second. For sure, लेकिन this is very bad news because Christian Pulisic has been the man for Milan. Came down as a stomach bug, I believe. इसलिए Christian Pulisic is not there. लेकिन like I said, Napoli are league leaders. Lead बोल रहा हूँ. Within the house, खाना खा लिया. बिल्कुल बिल्कुल भाई. I had a quick snack though, but it's okay. Where is the quizzes? Against Steve LFC, this is Anfield. Big up to you. Unfortunately, we have not got. I did दो तीन बार लाइव में अनाउंस भी किया था. इनफैक्ट मैंने अपने मेंबर्स कम्युनिटी में एक मैसेज भी डाला था. देयर आर नॉट मेनी टेकर्स राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ कंटेस्टेंट्स, but if you are able to get us more contestants, we will start it like tomorrow, bro. I love my quizzes and so do you. I know that. Ame in the house. What's up? Shubham बोल रहे हैं Napoli. अरे भाई Ame बोल रहे हैं 2-4. Afnan in the house. Good evening बोलेंगे कहाँ से भाई? From where are you all watching? I hope everyone is more or less in Asia, but a lot of you all, if you're abroad, let me know. Would love to know from where you're watching. Italy, मतलब Serie A match after all. लेकिन obviously breaking news आया है that Ruben Amorim to Manchester United, here we go, हो गया है. So we'll be in between, जब भी time मिले, we'll try and discuss that. I'm open to questions. Again, आप लोग बोलेंगे भाई इसको क्यों question पूछूं? Ruben Amorim was a manager जो बहुत closely linked हुआ था Chelsea से in the past as well, among other clubs. तो हमने scouting किया था उसका proper, so I can definitely help you out if especially you're a Manchester United fan. लेकिन अभी के लिए भाई Forza Milan in the house हो जाए सब लोग. Come on. Steve LSE Anfield or in Canada. I don't know if I've told you, but I know people. I've lived in Canada for a few years, मेरे भाई. Off-topic rumors are Kohli wants to be the captain for RCB for sure. चलो बात करते guys. Yes, we did a crazy nice stream on Almighty Sports. लेकिन यहाँ पर मैं रेडी रखता हूँ भाई. Again, very disappointed भाई. Very disappointed that Christian Pulisic is not beginning. I'm very disappointed. Again, bench देखे तो मतलब there is Tomori भी bench पर है, Christian Pulisic bench पर है, लेकिन I don't know how fit he is. Rafael Leao is on the bench. Wow. ये क्या हो गया भाई? एक सेकेंड. I just realized Rafael Leao is on the bench. हो क्या रहा है? It's a must win. मतलब on the table, Napoli are first, Milan are 8th, guys. Wow, I understand कि भाई हम, और by the way, I'm very surprised why. I'm pretty sure Rafael Leao का भी issue होगा. Why Rafael Leao is not starting? The Bologna game was suspended, bro. Milan had an extra couple of days of rest. Pulisic has a stomach bug. So Pulisic is there just for emergency. शायद Pulisic may not even feature. ठीक है. कोई नहीं शशांक, nice to see you always. Here आपको बताइए. Oh yes, लिवरपूल से भी लिंक था. लिवरपूल मैन सिटी चेल्सी से लिंक हुआ था, ऑब्वियसली आपको याद है तो. बट सीरियसली व्हाट इज दिस लाइनअप एग्जैक्टली? व्हाट इज दिस लाइनअप भाई? पुलिसिक का अंडरस्टैंड. आई नो ओकोफार रिसेंटली अच्छा किया था, चुक्वेजी भी दोनों ने असिस्ट लिया था रिसेंटली, बट कम ऑन, लॉफ्टस-चीक भाई, बिग वेट ऑन लॉफ्टस-चीक शोल्डर्स भाई. यहां पर ऑपोजिट में है पोलिटानो, लुकाकू, क्वारात्स्केलिया, एंगीसा, गिलमोर, मैकटोमिने. This is not going to be easy, guys. Harsha in the chat, सब लोग let's hit that like button or let me know your 2 cents on the lineup. Left back, for people who are wondering why is the youngster playing, because Theo Hernandez and of course midfield में Tijani Renders are suspended, guys. आपको पता है last time both did get that card, so they are both suspended, so that I can understand. But surely Napoli have इतने सारे options, bro. मतलब Napoli are looking the favorites even at San Siro आज. Wow, don't tell me. Or Tomori as well as Leao out. Christian Pulisic can get it because of stomach bug. Why are them both out? I don't know. Won't be surprised if the thrash Milan today. Let's see. मतलब for all we know, it might be totally opposite. देखते हैं. Again, freshening up the side एक चीज हुआ करता था. Fonseca, I don't know if he's getting it right. Fonseca
कम ऑन ब्रो, फोर्जा मिलान हो जाए इन द चैट सब लोग। चलो भाई शुरू हो गया, यहाँ पर टाइम स्टैम्प मैंने शुरू कर दिया है। आई एम वाचिंग इट ऑन GXR फॉर पीपल वंडरिंग। AC मिलान बी लाइक आज कुछ तूफानी करते हैं, पता नहीं यार। पुलिसिक, राफेल लियाओ, टोमोरी, मतलब three of the absolute starters are not there. By the way, it is a derby for Morata and Conte. Kind of, क्योंकि मोराटा ने खेला है कॉन्टे के लिए एंड वाइस वर्सा. Of course, Pulisic has played with Lukaku, so one cannot forget that as well. लेकिन Pulisic is on the bench. Remember, Loftus-Cheek खेला है Lukaku के साथ. He is there starting for Milan. Tammy तो अभी I believe is injured, right? Tammy is injured, so Tammy is not there. लेकिन कोई नहीं. Initially Lukaku putting pressure. Pavlovic, भाई गैबिया भी नहीं है यार, हो क्या रहा है? So many rotations आज. Theo Hernandez suspended, Tijani Renders suspended against Napoli, the league leaders, and Pulisic stomach bug. ये तीनों में समझ में आता है. लेकिन Tomori, Gabia and Rafael Leao not starting. Wow. Big call by Fonseca भाई. खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा है Fonseca. Karthik in the house. What's up? Morata or Lukaku, who would you choose? मतलब, to be honest, Morata is possibly the more reliable option, लेकिन Lukaku is the more impactful player, whether you like it or not. लेकिन दोनों ही नहीं. Can we have that option? Morata, I think, Lukaku hold up अच्छा कर रहा है भाई already. आता है सेरिया में, आती पता नहीं क्या माता आ जाती इसमें Lukaku में. I know, again, game of Serie A, the pace is a little bit slowish and all that. I totally get it. Bologna game was postponed because Bologna में floods थे, ऐसा कुछ था शिवम, I believe. एक नोटिफिकेशन आई थी उस दिन, हम लाइव ही थे उस समय. आई रिमेंबर, आई एक्चुअली वांटेड टू प्रीव्यू दैट गेम अलोंग विद दिस, बट कोई नहीं. गाइस, अगेन आप लोग लाइक टाग देख रहे हो ऑन द स्क्रीन. होपफुली यू गाइस आर विद मी. ऑफ कोर्स यहाँ पर विंग प्ले ऑफ नापोली से हमें केयरफुल रहना पड़ेगा. रिमेंबर दैट्स अ यंग फुल बैक ऑफ मिलान द लेफ्ट साइड हु हैज अ टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. लेकिन मलिक तियाओ and Pavlovic center half partnership, wow, against Napoli, the league leaders, मैं anticipate नहीं किया था. As much as they're good, Morata more dynamic. Yeah, I think again it depends on the kind of team you're playing और कहाँ खेल रहे हो. लेकिन I think, to be honest, Morata I would still rely on. Lukaku is like, wow, गोल आएगा, चलो भाई बच गया. Lukaku OP man, Lukaku getting a block of his own player. Napoli almost scored. Lukaku doing an Inter Milan wala Lukaku Champions League final wala Lukaku moment. Milan totally opened up from their left hand side. Of course, the young left back head did not even realize what's happening, bichara. लेकिन I like him. Again, Premier League types में लगता था कि Lukaku will do well, but he turned out to be totally different, right, Ritin? Amorim will play against us. Yes. भाई क्या इतना क्या जल्दी थी यार मैनचेस्टर यूनाइटेड को, पता नहीं क्या यार. एक तो पहले सैक कर दिए ETH को और फिर एमोरिम को बेसिकली इतना ज्यादा जल्दी. आई थिंक टुमारो थिंग्स विल बी फॉर्मलाइज्ड, आई बिलीव दैट्स द न्यूज. एंड अगेन रिमेंबर, टुमारो देयर इज अ मैच, चेल्सी मैच डे भी है भाई. कल बड़ा मैच है, चेल्सी न्यूकासल अवे है दिस टाइम फॉर द कैराबो कप अमंग अदर मैचेस व्हिच विल अगेन बी देयर दिस टाइम लाइव. अरे कुंवर भाई इन द हाउस, व्हाट्सअप मैन. मैं तो बहुत ही उदास हूँ भाई. मैं लिटरली मतलब 4 बाल्टी आंसू रोया हूं भाई. Ten Hag for life, man, you know it. Opposition fans are not happy about it. लेकिन to be fair, jokes apart, आपको पता ही होगा भाई that any Manchester fans that Eric Ten Hag literally had lost it. मतलब there was no looking back. और वो होना था. It was a matter of when and not if. भाई आज Theo Hernandez नहीं है ना बंदा. I don't know Terracciano. I hope he lives up to the expectation. लेकिन हाँ, Amorim is a good coach. Only thing is, क्या आप लोग already decided थे? क्योंकि इतनी जल्दी चीजें हो रही है. कोर and other Manchester fans in the chat, I am really surprised इतनी जल्दी चीजें हो रही है. It means that it was writing was on the wall for Ten Hag. It wasn't for the West Ham game. Man City fan बोले third class striker Lukaku. Lukaku ने बचा लिया भाई मिलान को. He did a block bro of his own player already. Chelsea will eat Newcastle, Ritin bol raha. I am not sure. It is at St. James's Park, which is a kind of not easy ground for us historically in cups. But last season, ओरे भाई एक सेकंड, Lukaku is through. Lukaku is through. गोल आ गया. हट यार, इतना इजी यार. कम ऑन, और मत खेलो टोमोरी को,
और मत खेलो टोमोरी को, और मत खेलो गाबिया को. Rubbish, man. Rubbish center half play, man. Rubbish. Through ball, आराम से Lukaku gets a touch, second touch and then scores. ऐसा भी नहीं कि right away scored. And you know what? Napoli have been the far better team. Fonseca has hit बड़ा वाला कुल्हाड़ी मारा अपने पैर पर. Fonseca. Horrible team selection. And how can you have a young center half and a young left back together in the game which is basically at home but against the league leaders? Jahan par 8th, it's a must win. And after what? After getting 2-3 days rest extra than Napoli? Really? Absolutely rubbish. Pavlovic, bro. भाई Pavlovic, जाके उगा ले भाई, उगा ले, खेत उगा ले भाई. इतना हट्टा कट्टा बंदा है Pavlovic. Seriously, bro, Pavlovic against Liverpool was crap and now already muscled out by Lukaku. मैं सोचा कि मलिक तिया हुए. Pavlovic was bloody shit, man. Shit defending, man. Absolute shit. Bodied by Lukaku, man. Bodied by Lukaku. And yeah, the first goal ka ball is secured, man. That's a Serie A thing, if you know. Nivesh in the house, क्या हाल है? Fonseca ने कुछ पता नहीं यार, कुछ शेडी लग रहा है मामला. Like after having a Theo Hernandez and a Tijani Render suspended plus a Pulisic stomach bug, जिसके कारण पुलिस के बेंच पर, these three understand how the heck can you afford to actually change your center half partnership against an informed technically Lukaku? How the heck? And you have the audacity not to start Rafael Leao. You actually have the audacity to do that. Barcelona, Napoli has the best signing. There is the managers. Yeah, Conte gives the belief, man. Gives the belief. Absolutely shit defending, man. क्या ही बोले यार. लकाका Ballon d'Or. यहाँ पर कुंवर भाई बोल रहे हैं, to be honest, I wasn't ready, but Ineos were looking for a replacement since last international break. I hope Amorim could be a good fit. I think it'll take time. I know it's like a Tuchel system almost, जो खेलता था in Chelsea, but it'll all depend on कैसे adapt करते हैं. I think Ugarte है Manchester United के पास, who has actually played a lot under its manager. That will help. So that new signing turned out to be a blessing in disguise. Tomori, yeah, he has mistakes in him, but Malik Tiao कोई दूध का झुला नहीं है, so is Pavlovic. मैच GXR में देख रहा हूँ. GXR ऐप डाउनलोड करो भाई, फ्री है. GXR go to Google Play and ऐप में देख सकते हैं, वेबसाइट में देख सकते हैं GXR वर्ल्ड. ये क्या है? रोड्रिगो और मैड्रिड प्लेयर रोड्रिगो का कमेंट सेक्शन सर्च करना. Say whatever you want, but this supposedly disastrous Ten Hag tenure still had more trophies than the Guardiola region Arteta. हाँ, मैं आज की वीडियो में exactly मैं वही ओपनिंग किया हूँ कि जो भी बोलो, at the end of the day you have to kind of at least give the thumbs up to get medals. Pulisic is on the bench, yes, Ankit. Amorim is more of a project building manager in my opinion than an instant result getting it. I think instantly result नहीं लेगा, लेकिन instantly he will secure the team in terms of a structure, a formation, an organization. He will get that, which is important. Important है क्यों? क्योंकि you can't depend on one Ugarte to do all the midfield work in terms of defense, right? तो वहां पर you need basically a structure. वहीं पर Casemiro might actually not be too bad after all. लेकिन seriously guys, what a bad goal conceded by Milan and what a bad team selection already by Paulo Fonseca. पता नहीं यार, seriously man. Zombo Anguissa is getting an assist quite easily, but in Nicolas के लिए left hand side cross लिया है and Milan, पता नहीं, मैं Milan Watchalong except for the Milan derby recently more losses ही हुए. Loftus-Cheek on the run, nice. Loftus-Cheek on the right hand side, I like Loftus-Cheek when he runs like that. Yes, absolutely. Chalo bhai, take your man on. Take your man on. Show your strength, man. Do a Lukaku, bro. कोई नहीं. यहाँ पर lose किया ball and then Napoli keep the possession back. Karthik Bora still is great to see my boy McTominay ripping it apart. McTominay and Gilmore, यार, आप सोचो, the midfield of Napoli is something which is actually winning games as much as Lukaku बहुत ही headlines ले रहा है. तीनों बहुत अच्छे हैं. ज़ोम्बो एंगीजा, गिलमोर और मैकटोमिने, दे आर डिफिकल्ट टू बीट वाला मामला है. बिल्कुल रिटन, I saw your comments and I think I responded as well. Absolutely. So Amorim to United is done. Do you think he will bring Gyökeres to United? Nah. मतलब will he get top 4? मैंने पोल डाला है शुभम.
Gyökeres deserves Champions League football. Gyökeres, by the way, is doing very well for himself. So I don't think he needs to follow Mr. क्या बोलते हैं Ruben Amorim. लेकिन he was technically in England previously. Gyökeres was on the books of Brighton, correct? पहले Coventry Brighton के लिए खेला, if I'm not wrong. And when we were linked, in fact, very strongly, Lampard wanted him or something. Lakaka prime Drogba. निवेश GXR वर्ल्ड करके है, GXR वर्ल्ड करके वेबसाइट है, या आप मोबाइल में देख रहे हो तो यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले. GXR, that's where you can see it. Absolutely, thanks Ritin. Milan getting some semblance, getting some control into the game, guys. Finally, Chukwueze, nice work, beats two men. फ्री किक है यार, फ्री किक नहीं लेना था ना, जाना था. Why did he fall down? But कोई नहीं, at least we got a free kick. Come on, we need to come back into the game by a goal यार. Morata भाई, show leadership skills right now. Pulisic is on the bench, definitely at some point लाना चाहिए हमें, लेकिन Okafor, Chukwueze and Morata as well as Loftus-Cheek are four good attackers we have. By the way, Fofana in midfield has not been visible almost. बहुत अच्छा player लगता है मुझे. In Tijani Render's absence, we need him. He didn't get them to the top 10, bro. Brentford, Bournemouth, Fulham, Forest are all settled and give tough competition. Okay, I don't know. Okay, talking about Ten Hag, is it? विंटर में अब कौन देगा 100 मिलियन? नहीं, विंटर में तो नहीं, आई थिंक नेक्स्ट समर की बात हो रही थी, लेकिन कोई नहीं. भाई, that was a chance. Terracciano, the left back, young left back, shot directly to the Napoli wall almost. Free kick wala. Come on. Keep the possession. Nice. Fofana gives it to Chukwueze right side में. Chukwueze कट करेगा, क्रॉस करेगा फार पोस्ट में. अरे भाई, नाइस, बट कोई नहीं था unfortunately. Morata should have been at the far post, but no, he wasn't. Lukaku, man, look at his hold up play, man. Look at Lukaku's hold up play. Morata भाई coming to the left back position. Terracciano कहाँ भाई Terracciano क्या कर रहा है भाई Terracciano? मोराटा को लेफ्ट बैक जाना पड़ रहा है, क्या हो रहा है भाई? लुकाकू के जगह where he is attacking in the opposition box, Morata is coming and defending the striker of Milan. Totally bodied, bro, Lukaku. Milan team को. Yep. Actually, it's kind of a derby in a weird sense. Exactly, Karthik. और दोनों कॉन्टे के फेवरेट प्लेयर्स रहे at one point in time. If you know. Lukaku again beating two men, man. What rubbish, man. Bulldozer हट बे. क्लियर कर दिया somehow. सेरिया ज्यादा कॉम्पिटेटिव लगता है मेरे को आपके, या बिल्कुल 100%. सेरिया फार्म आई थिंक आई वुड लाइक टू पुट एकदम सबसे कॉम्पिटेटिव लीग है यार. रिटन राइट अप देयर, एटलीस्ट फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स, राइट अप देयर. Lukaku, very well intercepted this time by Pavlovic. Lukaku as actually bulldozing the central midfielders and the central backs of Milan. भाई फोफाना, Pavlovic और क्या नाम है, मलिक त्याव खेल नहीं पा रहे उसके अगेंस्ट. लकीली भाई यहां पर बट में लगा एमरसन रॉयल का और फेल टू हिज फीट. क्रेजी मैन, एब्सोल्युटली क्रेजी. He's boarding, man, bulldozing, literally bulldozing. Do you think Palmer will play against Newcastle? I doubt he'll start, but I definitely believe bench पे रहना चाहिए. It is a knockout game after all. भाई क्रॉस बढ़िया है यहाँ पर. एमरसन रॉयल, important header interception भाई. Ramit, bad start, guys. Very bad start. Terrible team selection after the suspensions and stomach bug. लेकिन फोन्सेका खुद को पता नहीं कौन सा 30 मार का समझता है. GXR वर्ल्ड, गाइस, GXR वर्ल्ड करके वेबसाइट है, या जस्ट गूगल फॉर GXR वर्ल्ड, और यू कैन लुक फॉर GXR एज एन ऐप इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम इंडिया एटलीस्ट. लुकाकू हैट्रिक कमिंग, हमें तो बोल रहे हैं. बुंडेसलीगा इज, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टीम्स व्हिच गो फॉर द टॉप 4 एंड द टाइटल एक्सेट्रा, वहां पर सेरिया एटलीस्ट लास्ट 3-4 सालों से मैं बोलूंगा सेरिया है. Serie is probably the most competitive league in terms of just the competition in the top 4-5 and the top 2 ऐसे. Malik Thiaw was actually better, exactly, Ritin, surprisingly. But Pavlovic, the way he got bodied for that goal, चुल्लू भर पानी, dude, वो तो उसके लिए तो चुल्लू भर पानी भी बस नहीं है, इतना लंबा चौड़ा इंसान है, ऐसा बॉडी हो गया ना.
पेप का इंटरव्यू देखा, बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, कौन सा वाला इंटरव्यू की बात कर रहे हो? मतलब बैलन d'Or जीतने के बाद में? बाय द वे, बैलन d'Or, फॉर पीपल हु नॉट वॉच लास्ट नाइट स्ट्रीम एंड माय व्यूज, थॉट्स ऑन दैट। मेरा तो थॉट्स है कि रॉड्री डिड नॉट रॉब। यस, तरीका गलत था बैलन d'Or का, और वो अफवाहें गलत थी जो नहीं होनी चाहिए थी। दैट्स बैड फॉर विनीशियस जूनियर, वी फील बैड। बट एनीवे, इन माय ओपिनियन, रॉड्री slightly, but just slightly would have been above Vinicius Junior in the ranking, in terms of our power rankings. लेकिन Vinicius Junior also deserved it. लेकिन वो इट्स अ फार्स भाई बैलन d'Or। लेकिन हाँ, मैंने देखा, ही डिडंट केयर अबाउट बैलन d'Or वाला चीज बोला था पहले। सिद्धार्थ बोले टू अर्ली फॉर व्हाट, लाइव स्ट्रीम, और टू अर्ली फॉर नापोली टू स्कोर? नाइस, नो, गिलमोर कीप्स द बॉल समहाउ। पोलिटानो रेजिस्ट करता है प्रेस, फर्स्ट टाइम पास ऑन द राइट हैंड साइड में। कम ऑन, लुकाकू इज अगेन देयर फ्री मैन, बचा लिया भाई। ही वाज ऑफसाइड एनीवे, मलिक तियाव ने बचा दिया एनीवे। रोड्रिगो डी पॉल को गाली पड़ गई, अच्छा मैंने देखा नहीं। देयर वाज समथिंग स्पेसिफिक दैट वाज टोल्ड, आई डोंट नो अबाउट दैट। व्हाट वाज टोल्ड एग्जैक्टली बाय पेप? मैं हाइलाइट देखा था बस, मैं पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, हाइलाइट देखा था बस। आई थिंक आई सॉ इट इन अ रील और समथिंग। बट एनीवे, यहाँ पर काउंटर आ रहा है लुका मिलान का। 100 goals and assists in Serie A for Lukaku, who has just scored against AC Milan tonight in San Siro. Wow. क्या ही बोले यार. And that too, what a goal to concede. By the way, this was a recent UCL quarterfinal, guys, if you all remember. This was a recent UCL quarterfinal, 2 साल पहले. UCL 2010-11 में AC Milan और टॉटनहम का मैच हुआ सैन सीरो में, as far as I remember. सैन सीरो में, हाँ, definitely. I think that was a season where I think Gareth Bale छा गया था, types. Was it that? Loftus-Cheek again. Dembele was there, right, in that team? No! Just boy, almost scored. Loftus-Cheek gives it to Yunus Musa, who, by the way, is coming to the team, remember, today, क्योंकि Tejani Renders is suspended. अच्छा, वो क्या है? आई डोंट केयर अबाउट द फैंस से ब्रो, बिग अप टू देम। लेकिन रॉड्री इंस्टा पे नहीं है, तो मैड्रिड फैंस को लगा ओके। अच्छा, नाउ आई गॉट इट हर्षा, सॉरी। कार्तिकेय ने कंफर्म कर दिया भाई, तो उनको लगा रोड्रिगो एथलेटिको मैड्रिड अर्जेंटाइन प्लेयर वन द बैलन d'Or। भाई ये फुटबॉल फैंसी की क्या है? जुनेद, ऑल गुड ब्रो, हाउ आर यू? यू टेल मी गाइस। जो भी लोग देख रहे हैं, रिमेंबर टू हिट दैट लाइक बटन। वी आर टारगेटिंग 125 लाइक्स ऑन द स्ट्रीम। कितना लाइक्स हो गए इन द स्ट्रीम, लेट मी नो। ऑल्सो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, in whatever part of the world you are, in whatever club you follow, whatever sport you follow. In fact, we have 2 sports channels. Almighty Sports भी है नीचे, आप चेक कर सकते हो, जहां पर स्ट्रीम की है। बट डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन ऑन बोथ द channels. Lukaku, brilliant glance header, but falls to a Milan defender. Loftus-Cheek again, he's good going forward, but defensively, I don't agree with that, Shubham. I think he could help out. There were moments जहां पर Morata is helping defensively, Loftus-Cheek को करना चाहिए। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा किया है Loftus-Cheek अटैकिंगली एज ऑफ नाउ, बट वो फाइनल थर्ड में उसका डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज अ कंसर्न। Too early to judge Amorim, give him time. Ocha, exactly, Siddharth. No, you're right, absolutely. Lekin what I'm saying is it will anyway take time. But are Manchester United fans ready to give him time? जो हमने बोला था, सेम चीज अबाउट एंजो मरेस्का। लेकिन वही है, इवन एरिक टेन हाग केम विद अ लॉट ऑफ potential, good win percentage, trophies, UCL experience as well, or assistant coach in a top club like Bayern Munich. अब देखो, it was a good resume भाई जो आया था एरिक टेन हाग। It was all, at the end of the day, it's all about how are you able to grow into the big role of being a Manchester United slash EPL top club manager। वो बहुत अलग सिनारियो है, लेकिन technically I don't think it's an issue. Manchester United players, will they fit that 3-4-3? Not sure. Maybe like Tuchel, he might change the system for all we know. Tuchel ने चेंज किया था जब आया था PSG से टू चेल्सी। बट यहाँ पर चुकवेज़ी, नाइस शॉट भाई, रिबाउंड, नो वन वाज देयर। चलो, थैंक यू रितिन। व्हाट डू यू थिंक ऑफ चेल्सी 11 टुमारो? चलो, चेल्सी 11 कल क्या होने वाला है? मुझे लगता है, शुभम, आई बिलीव इन गोल
I am hoping Jorgensen gets a chance. Yes, I know it's against a Premier League side proper in Newcastle United, जिनसे हम just about जीते थे on the weekend. But I think Jorgensen should get a chance. Sanchez was again shit. Let's be real. Sanchez is again shit. By the way, Conte क्यों लड़ रहा है भाई? Conte खुश नहीं है. कुछ मिस किया क्या मैंने? Conte is not happy. He's been spoken to by the ref. लेकिन हाँ, तो on in goal Jorgensen. आप भी बोलिए शुभम अपना. Left back, I would like to say because Carabao Cup में you don't have, Conference League में you don't have in the squad Chilwell. If Chilwell is fit, he gets in. नहीं तो Kukurea did not start the game, so why don't you start him? Or maybe Kukurea did not start other game क्योंकि उसको पता था शुरू करेगा. Actually Kukurea ही आएगा. Chilwell on the bench at best अगर फिट है तो. वो nice corner भाई ओकोफोर द्वारा. लेकिन होप दे डोंट काउंटर नापोली. तो कुकुरेया लेफ्ट बैक, यू हैव गोलकीपर योर्गेंसन, राइट बैक रीस जेम्स प्ले द एंटायर गेम वीकेंड with obviously Gusto who didn't complete the game comes in, no two ways about it. Center back partnership, you might like to think you might want to rotate proper, although Levi Colwill had a good game I thought, लेकिन Fofana did not have a good game और anyway rest चाहिए उसको. So you have Bardeshile and Disasi maybe coming in, or maybe Bardeshile and Tosin. I'm okay with any of them actually against Newcastle. We need the height, physicality. और central midfield में I believe so Enzo definitely शुरू करेगा इसमें considering he didn't start day of yesterday. And along with Enzo Fernandez, you will probably have Caicedo again. I'm assuming Lavia takes a rest. And then you have Felix, Modric, Sancho, and Nkunku. Sancho playing right wing. Raj in the house, what's up? Bhai, Milan is having a good spell in the game, touchwood. Napoli defensively अच्छे से structured है भाई. That's a Conte team, bro. That's a Conte team. Again, early goal concede किया, rubbish goal by Milan. Pavlovic पता नहीं इतना 6 फुट 6 इंच पता नहीं क्या चीज का है, और वो भी लुकाकू से बॉडी हो गया. मैच के पहले ही ईटीएच को सैक कर दिया. ऑनेस्ट थॉट्स, मतलब इट इज बेसिकली सिंपल चीज की वी आर वेरी 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 सैड ब्रो चेल्सी फैंस. लेकिन न्यू मैनेजर बाउंस, इट वर्क्स मोर और लेस. लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि रातों रात चेंज करना डिफिकल्ट है. बट एमोरिम माइट गेट अ ड्रॉ मैन, डेफिनेटली. लेकिन एट होम है, यू नेवर नो. हाँ, कल मेंदू बड़ा भी खेलेगा भाई लिवरपूल के लिए. एब्सोल्युटली, ही केम ऑन राइट एट द वीकेंड. Your reaction on Maresca's statement on Sancho? Will he play Sancho versus Newcastle? He won't play against Manu, and Neto will have lots of load. Oh, bhai, almost a goal, man! Emerson Royal, I think it struck the post. What a shot by Emerson Royal, bhai, from the right-hand side. Brilliant shot. Wow. ये कहाँ से आया भाई? Almost hitting the post, just missing the post rather. Did the goalkeeper have it covered? No. It would have been a goal, भाई. Emerson Royal अच्छा किया भाई इस मोमेंट में. More of the same and just hit on target. भाई Chukwueze has got a shot on target. Remember in the last few minutes, जहां पर their goalkeeper Napoli का goalkeeper got a good save, but rebound there was no one. And then अच्छा spell था for 2-3 minutes, and then Emerson Royal put a shot just wide. तो सैंचो का मैंने सुना. आई थॉट व्हाट आई टुक फ्रॉम द स्टेटमेंट, मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इज लाइक ही एक्चुअली रेट सैंचो एंड ही इज लाइक रेडी टू प्ले व्हेन कॉल्ड अपॉन. ठीक है, एंड द बिग गेम्स रेडी टू प्ले, इट डजंट मैटर. लेकिन ही ऑल्सो एडमिटेड कि कहीं ना कहीं राइट विंग में भी खेल सकता है. तो आई थिंक आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आज ही हो गया अब तो, that he will actually play on the right wing with Mudryk on the left hand side. Or yes, you have a point about Manchester United के लिए technically on loan to buy है ना, तो he is not eligible. That's a good point. Weekend में यहाँ offside हो गए भाई मिलान. I think Serie A should get the attention. It's exciting. अरे बिल्कुल बिल्कुल. हम तो भाई it's almost like कभी कभी stressed होता हो ना, तो Serie A is actually a stress free वाला zone for me. Guys, again, जो भी लोग देख रहे हैं, do not forget to hit that like button. 125 likes on the stream target है. And if you're new to the channel, consider hitting that subscribe. And we have restarted up पागलपंती बढ़िया content on Almighty Sports as well. Link below, आप लोग जानते ही हो. बिल्कुल भाई आशुतोष, unfortunately Bayern Munich, I think they will bottle it already this time. मुझे लग रहा है मरते मरते जाएंगे नॉकआउट स्टेज में, एंड देन दे विल बॉटल इट.
भाई ऑनेस्टली मैं कंपनी को नहीं रेट कर रहा इन द चैंपियंस लीग, वो नहीं लग रहा, वो स्टील स्टील जो होता है ना बायर्न म्यूनिख साइड्स में, इट इज मिसिंग, इट इज मिसिंग फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली। बायर्न म्यूनिख, देयर आर सम टीम्स ना जो यूरोप में बहुत बड़ी गलती की है, एंड आई नो कंपनी ब्रिलियंट फुटबॉल खिलाता है, बट आई नो कि उसका प्लान भी नहीं है उसके पास ज्यादा, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। ही इज एन एंज इन यूरोप, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और आई थिंक बायर्न म्यूनिख यहाँ पर प्रेस बाय नापोली ओनली फॉर अ फाउल टू बी वन बाय एमरसन रॉयल, जो इंजर्ड लग रहा है। नो मैन प्लीज, ही हैज हैड अ गुड स्टार्ट। अच्छा, बायर्न म्यूनिख एंड रोमा, मतलब who sacks Jose Mourinho and sacks De Rossi, bro? What is Roma doing? Roma 5-1 हारी है फियोरेंटीना के साथ at the weekend, 5-1। wow, I know रेड कार्ड हुआ था, बट 5-1 फियोरेंटीना, आई नो फियोरेंटीना अच्छे फॉर्म में, बट कम ऑन। बाय द वे वो लोग है कॉन्फ्रेंस लीग में फियोरेंटीना, डेविड डिया, मोइसे कीन एंड ऑल, it will not be that bad, but I think Roma and Bayern Munich have done some mistakes, by in my opinion, in terms of sackings. चलो, शुभम का 11 आ गया है अगेंस्ट न्यूकासल अवे, योर्गेनसन, चिलवेल। मैं आई थिंक आई वुड हैव चिलवेल ऑन द बेंच, कमिंग ऑन फ्रॉम द बेंच वाला मामला, आई वुड हैव कुकुरिया स्टार्टिंग। आई थिंक कप गेम है, इट्स इंपॉर्टेंट दैट स्टीलीनेस। ओकोफोर नाइस कट इन, एक सेकंड, ओकोफोर का छक्का, इसको बोलते हैं बढ़िया छक्का, क्रिकेट खेलने का मन है ओकोफोर को। कहाँ रफा लिया पुलिस को, कहाँ ओकोफोर यार, कोई नहीं। लेकिन चिलवेल, दिसासी, टोसिन, नहीं, Badiashile needs to, Badiashile deserves the start, bro. Recent game, I think Badiashile was the best defender when he played as a game on against Liverpool, I guess, right? Then you have James वापस, I really doubtful. I दो चीज मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, I don't see Chilwell starting, I don't see James starting, ठीक है, on the bench रहेंगे दोनों, and that center back partnership I don't think so. I think it'll be a I feel it'll be a Disasi, and आज इस बार बाडिशल दिसासी मोनेको वाली पार्टनरशिप ट्राई करेगा। कैसिडाई गोल आएगा, नो वे, यूनिस मूसा मिस्ड इट, वेल डन बाय द कीपर टू कम आउट मेरिट, बट श्योरली भाई दैट वाज अ चांस। क्या हाल है भाई अभिषेक? एक सेकंड, कमिंग बैक टू द लाइनअप आज का अगेंस्ट न्यूकासल अवे, coming to all the comments again, guys, you can always prioritize the comments, you know how, banner देखो। लेकिन कैसेराई स्टार्टिंग इन एन अवे गेम इन अ नॉकआउट टाई, यस, एंजो मेरेस का खेला है उसके साथ पहले इन लेस्टर इन फ्यू गेम्स, बट श्योरली आई डोंट सी दैट हैपनिंग। I want Enzo and Caicedo to kind of get a proper game in this game. Yes, Man United at the weekend, I get it. Like we have Romeo Lavia available, right, as an option. To it's not so much of a risk. We cannot get eliminated, bro. And after 90 minutes, it's penalties if I'm not wrong. Carabao Cup है. Nothing against Caceres, लेकिन हाँ, Felix, Nkunku, Sancho, Modric, I totally agree, as well as Enzo. Yes. We need Serie A camera angles and Premiership. I think अलग अलग कवरेज का भी होता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो हु विल बी टॉप 6 इन द प्रीमियर लीग दिस ईयर? मतलब मुझे तो लगता है आई स्टिल स्टिक माय नेक आउट एंड से लिवरपूल विल निक इट, नॉट दैट आई वांट, बट आई एम जस्ट हैविंग अ इंच, वो होता है ना हंच। लिवरपूल फर्स्ट, मैन सिटी सेकंड, आर्सेनल थर्ड, फोर्थ आई वुड लाइक टू से दिस पॉइंट टाइम चेल्सी, फिफ्थ I think Aston Villa will just about get fifth. They are looking really good. They have many goal scorers भी। Sixth मैं बोलना चाहूंगा Manchester United, now that they are appointing a new manager. Yes, Tottenham कहीं ना कहीं seventh होगी, is what I'm saying, क्योंकि they are so unpredictable, just like United. यहाँ पर Politano gets the ball like a gift. Company is building things. I see Bayern fans are happy with him despite, like, they're doing really well in the league. They're playing very good football. लेकिन वहां पर जो चैलेंज होता है, स्पेस मिलता है, वर्सेस व्हाट यू गेट इन यूरोप इज डिफरेंट, राइट? आई डोंट थिंक इज अ कप मैनेजर काइंड ऑफ सिंपल एज दैट। चुकवेसी थ्रू बॉल फॉर लॉफ्टस चीक, लेकिन नहीं, लॉफ्टस चीक लेट। रोमा रिजन फ्रॉम द रूइंस एंड देन dug themselves under the ruins. Actually, Roma have never really risen from the ruins, if I'm honest, as much as Mourinho got them to a European trophy, and of course that was huge, right? लेकिन to be honest, week in week out में they have not gotten them back. टॉटी के बाद में they have not gotten them back. Maybe De Rossi के बाद में। Leverkusen, I'm putting in them as 6 favorites मेरे भाई। मेरे टॉप 5 favorites for the Champions League are Real Madrid / Man City, मेरे ख्याल से जीतेगी, is what I'm saying. I think semi-finals में बार्सिलोना जाएगी and Inter Milan, and you have, और कौन सा टीम मिस किया भाई, एक और बड़ा टीम कौन सा मिस कर दिया मैं?
मैं खुद ही भूल गया, एक सेकंड। मैन सिटी, रियल मैड्रिड, इंटर मिलान, एक सेकंड, थ्रू बॉल है, गोल आना चाहिए। नहीं, मोराटा, यू शुड हैव डन अ पेड्रो भाई, डिफिकल्ट फिनिश था, लेकिन कटबैक किया, ब्रिलियंट क्रॉस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मोराटा कुड नॉट गेट एन असिस्ट और वेल क्लियर्ड बाय नापोली। भाई किसको मिस कर दिया? रियल मैड्रिड, मैन सिटी, इंटर मिलान, लिवरपूल, एक और मिस कर दिया भाई। होता है भाई, 1 बजे 2 बजे रात को एटलीस्ट। चलो अभिषेक 11 देखते हैं आज का। योर्गेंसन, अच्छा बार्सिलोना, आई थिंक आई सेड 6 राइट, हाँ। योर्गेंसन, दिसासी, टोसिन, बार्डिशिल, अच्छा यू विल प्ले ऑल द थ्री, सो यू आर गोइंग विद राइट बैक दिसासी? नो यार, कम ऑन, याद रखिए गॉर्डन डिड नॉट प्ले ऑन द वीकेंड, गॉर्डन माइट बी अवेलेबल for this game. And I am actually not taking a risk of Disasi playing right back, bro. No way. Vega. Nah, Kukure has got to start. Bhai, Newcastle. Away, wo bhi. St. James's Park. As much as Vega is not bad. Again, it's up to you. Dewsbury Hall, Mudrik, Felix, Sancho and Nkunku. I think forwards में agree करो आप लोग से. यूनुस मूसा यार, जल्दी खेलना था ना, कोई नहीं। एमरसन रॉयल को मिला राइट साइड में, एमरसन रॉयल क्रॉस, low cross, is it a handball? No, it isn't. Rebound of Emerson Royal, falls back, nicely headed by Morata, just about keeping it in the gameplay, लेकिन यहाँ पर well blocked by Napoli, midfield of Milan, put it leftish side से आ रहा है अभी, Terreciano भाई, correct your errors, you and Pavlovic, you have to correct your errors. Why did Dobic choose Roma over Atletico? I think उसको assurance मिलने होंगे रोमा में that he would start, is what I'm guessing. And again, some people like challenges, some people don't. उसमें कुछ नहीं है. Atletico में it's a good squad, right? Better squad rather. ना भैया, I think City will win league, Liverpool fall off हो जाएगी, देखते हैं, मतलब again एक hunch बोल सकते हो उसको. Why this watch along? Because we try and do other content as well, not just Chelsea, bro. Always it's a fan channel for all to see, and again have a soft corner for Milan over the years, and Serie A as well, which we always try and cover जब भी bandwidth free होती थोड़ी बहुत भी. But also Amorim वाला न्यूज भी आया था, तो I thought it's a good excuse to come and speak to you all, especially the Manchester United fans. De Rossi sack was the worst thing. Yeah, I think even before that, Mourinho itself, one would argue. Nice hold up play. मोराटा एंड ओकाफोर का अच्छा लिंकअप, लेफ्ट हैंड साइड में मोराटा को ज्यादा ही कर लिया है, क्रॉस आया भाई बढ़िया बाय नापोली, जस्ट अबाउट हेडिंग इट, चुकवेजी क्रॉस अगेन, गोल आना चाहिए, नहीं यार, वीक हेडर, लॉफ्टस चीक 6 फुट 8 इंच का हो गया भाई, कम ऑन मैन, शुड डू बेटर. ओके, नहीं बायन, मैं कौन सा टीम मिस कर दिया था भाई? टॉप 5 मैंने वीडियो निकाली, उसमें मैंने क्लियरली बोला है मेरी रैंकिंग फेवरेट्स का रिसेंटली मैच डे 3 के बाद में. But yeah, I think City will win this year too because of squad depth. Raj, yeah, possibly. Siddharth Bode, everybody is talking about Vinicius Junior Ballon d'Or controversy, but nobody is talking about Lautaro. I am talking. Siddharth, I was there. I shouted like literally crazy, bro. मैंने बोला Lautaro, Cruz, even more so, I would say Florian Wirtz. They were literally robbed, bro. मतलब यहाँ पर coming together था, लेकिन Zombo Anguissa ऐसे गिरा कि जैसे कि बेसिकली क्या ही, तो he was shot in the foot. कोई नहीं, फ्री किक मिला नापोली को. Conte teams doing Conte things, man. But coming back to that point of Siddharth in the chat, I like to say that not just Lautaro, Toni Kroos also not in the top 6. I'm shocked. Also Florian Wirtz. Again, it was power rankings, but clearly, in my opinion, Florian Wirtz should have been there. Lautaro should have been there, as well as अपना क्या बोलते हैं, Toni Kroos. At least 2 of the 3, if not 3. Kukurea will invert and Vega and Kukurea will do defensive duties. But I don't think we have the transition के लिए legs, bro. KDH आप देखो, Kukurea is the only one. आप अकेले पड़ जाओगे भाई, Kukurea. अभिषेक समझो, you are putting KDH and Vega there, right? Transition legs, you know what it is against Chelsea. It's a cup game. बहुत risky है. So I think I would like to risk Caicedo. Caicedo is the only risk I'm taking, so as to speak, before the Man United game, which is away as well. Ooh, Kvaratskhelia from the left-hand side trying to beat his man. Lekin Emerson Royal has had a good game among a rubbish Milan, at least in the first few minutes. Villa's start in UCL have been impressive, especially Duran. Yes, Villa will reach the knockout 100% in my opinion. 100%.
हाँ भाई, आशुतोष लग रहा है अनफॉर्चुनेटली। देखते हैं व्हाट हैपेंस। मैक्टोमिने पुटिंग इन लुकाकू लाइक नो वन एग्जिस्ट्स इन मिडफील्ड ऑफ मिलान। व्हाट इज दिस बाय मिलान? एब्सोल्युटली रबिश। डोंट अलाउ द क्रॉस। यार तेरे चियानो, माई मेन्योन ने बचा लिया जस्ट अबाउट। व्हाट रबिश भाई, ये बंदा पोटेंशियल है लेकिन थियो हर्नांडिस का टी भी नहीं है यार। शॉट आ गया ऑलमोस्ट गोल। पोलिटानो नियर पोस्ट जस्ट बीटिंग द नियर पोस्ट वाइड। व्हाट इज मिलान डूइंग भाई? अच्छा पोजीशन कंट्रोल कर रहे थे फॉर 10 मिनट। व्हाट इज हैपनिंग ब्रो? दिस इज नॉट डन। समथिंग्स गॉट टू बी डन गाइस, समथिंग्स गॉट टू बी डन। वी आर लिटरली डोमिनेटिंग द गेम और कंट्रोलिंग द गेम लास्ट 10 मिनट तक, और अभी दो चांसेस हम लिटरली दिए 1 मिनट में नापोली को। एब्सोल्युटली रबिश मिडफील्ड एंड डिफेंस ब्रो। And again, I repeat, I love a Loftus Cheek, but Loftus Cheek in defensive work should help his other midfielders, in my opinion. They are too porous in midfield, in my opinion. Just too porous. Fofana, देखते क्या करता है बंदा. Again, remember, Pulisic का stomach bug है, and Tijani Renders is suspended. Theo Hernandez is suspended. उसके बावजूद he had the audacity, Fonseca, at home though, but playing against league leaders in a 6-pointer when you're 8th in the table, to rest Tomori, Gabia, Fofana shot, easy catch for the keeper merit, but हाँ, as well as Rafael Leao जो bench पर ही है. Wow, this is like telling bro. बहुत ही कुछ हुआ होगा, कांड हुआ होगा, पता नहीं on the sidelines. I don't know what would have happened, but something would have happened, I guess. क्या हुआ पता नहीं. Fonseca's teams are too susceptible defensively. Chetan, good point. Absolutely agreed. Absolutely agreed. I don't know if you saw my reaction when Fonseca was appointed on social media as well as here, but मेरा वही first चीज था कि Fonseca के teams they might look good sometimes compared to अपने जो coaches थे previously Milan, right? What Milan have generally infamous for. लेकिन you also have scores like 4-2, 5-1 very often उसके teams में. AC Milan का मैनेजर अच्छा नहीं है बिल्कुल इन अ वे. Why isn't anyone playing Palmer in the 11? This is not EFL, not Conference League. मैं 11 में नहीं डालूंगा लेकिन बेंच पे डालूंगा because Felix and Nkunku have also been good. That is the only reason, and I think दोनों के पास experience है to get us a victory. चलो यहाँ पर shot McTominay shot, easy catch. Come on. Ballon d'Or हिस्ट्री में रॉब्ड वर्ड इतना इजीली होता है. पीपल सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट CR7 मेसी एक्चुअली डिड. उनका ऑलमोस्ट हर बैलन डोर विन के लिए इट्स नॉट नेसेसरी दैट समवन वाज रॉब्ड. नहीं तो देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन ना रवि. तो द प्लेयर्स हु डिड नॉट गेट, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं एग्जांपल के तौर में, स्नाइडर, वेस्ली स्नाइडर वाज रॉब्ड. आई डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल पर्सन हु वुड डिसएग्री. वेस्ली स्नाइडर इन 2010 वाज डेफिनेटली रॉब्ड. There's no two ways about it. 2013 में Robin, Ribery, I think were robbed 100% in my opinion. 2012 में maybe one can argue Neuer. मतलब example मैं दे रहा हूँ. Maybe मतलब Iniesta in 2009. I'm just saying, giving some examples. तो at least there are points of view of the players जहां पर they didn't have the numbers, but जैसे Rodri को मिला है, Modric को मिला था previously, they should have probably considered different approach. लेकिन उसमें गलती नहीं है रोनाल्डो मेसी की. नो प्रॉब्लम एट ऑल. देयर इज नो प्रॉब्लम इन मेसी एंड रोनाल्डो फैंस. द प्रॉब्लम इज दैट द बैलन डोर का जो वोटिंग सिस्टम है ना, इट इज पॉपुलैरिटी बेस्ड, इट इज रिसेंसी बायस बेस्ड, वो सबकॉन्शियस बेस्ड होता है. एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू चेंज एंड मेक इट ऑब्जेक्टिव. आशुतोष बोल रहे हैं एमरम could match Man United game style. I rate him high. I don't think he'll really match it. I think unless वो adapt करे, it's difficult. क्योंकि yes they have a destroyer in Ugarte, but they don't have a Hulman. If you know Hulman, पता है ना आप लोगों को भाई, he is a goal scorer, long shot taker as well as ground space बहुत ही ज्यादा कवर करता है, बहुत ही ज्यादा नॉन स्टॉप. मतलब at times they just have Hulman running entire midfield sporting. तो वहां पर I don't know who's that guy. I'm not sure who's that guy. तो I think they may eventually want to make signings, but देखते हैं जनवरी में आता है कि नहीं. But it'll take time, but he'll finally get it, and he might change the formation for all we know. Lopetegui, I think has been hyped again because of his European exploits. Yeah, भाई मतलब मैं encyclopedia चलती फिरती नहीं हूँ.
सॉरी, भावना को ठेस पहुंची तो माफ करना मेरे भाई रवि. All I'm saying is I'm just giving an example. 2010 ka I was sure, but I'll just check it out. But it's not about the goals also. By eye test is a thing. Neuer, I think not him not winning a single Ballon d'Or, being a pioneer of goalkeeping, and is a little bit of robbery. I feel that's my point. Schneider, what he did in 2010, where Holland wasn't expected to get there. They were in the finals, and he was key. और ट्रेबल फॉर इंटर, यहाँ पर राइट साइड में मिलान ऊपर कर दिया, लेकिन बाहर खेल लिया यार. लेकिन हाँ, इतना आप टची क्यों जाते हैं भाई बैलन डोर के लिए? हम यहाँ पर अपने अपने टीम्स के लिए इतना टची नहीं होते जितना बैलन डोर के लिए टची हो जाते हैं लोग. समझ में नहीं आता मुझे आज तक भाई. एक अवार्ड है, इंडिविजुअल अवार्ड, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता भाई. मेरा मेरा गोट पर्सनल जॉन टेरी रॉबिन हैवंट वन बैलन डोर्स यार. हाँ, मैं थोड़ा बहुत बोलता हूँ कि दे वर रॉब, बट ऐसे नहीं है. बट ठीक है. By the way, you were talking about Tomori. He has been pretty bad. Yeah, he's been very bad. In fact, you can watch our videos from 2021 when I was actually saying that Tomori was a little bit hyped by us Chelsea fans. He was good. Absolutely love him to core. Lekin, I think he always had a mistake in him. Aap dekho the match against Chelsea that he played. He got a red card, etc. That also I remember. Mainu, no. Sorry, not going to buy that. आप अगर ह्यूलमैन का आप देखते हो ना, द ग्राउंड कवरेज ही हैज भाई, इज इंजन भाई, टर्बो है उसके अंदर, टर्बो है प्लस अ शॉट, एंड ही इज अ गुड प्लेयर. आई थिंक स्किल लेवल में मे बी, आई थिंक माइनो को मैं आई विल पुट हिम इन अ वेरी सस्ता और वेरी अर्ली, almost like a Paul Scholes, where Paul Scholes were wow on the ball, but without the ball, I have issues in Mainu, if I'm honest. Nowhere close, bro, in terms of work rate. But I hear you in terms of ability here. Nah, Ashutosh, sorry. 2009, I can still buy it. 2010 में no one can beat. भाई एक सेकंड में बोल देता हूँ. First of all, it used to be a calendar year. Respect you, love you, bro. It used to be a calendar year, ठीक है. वेस्ली स्नाइडर ने 2010 में, मतलब आई एम नॉट इवन सेइंग रॉबिन एटसेट्रा, व्हाट ही डिड. एक सेकंड, यहाँ पर डिफेंडिंग का मोमेंट है फॉर मिलान. लकीली वी डिफेंड जस्ट अबाउट इन द बॉक्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ नापोली, लेकिन वापस से क्लियर करते नापोली को दे दिया बॉल. चलो, लेकिन हाँ, तो वेस्ली स्नाइडर ने जो किया था, एंड आई डोंट नो आशुतोष, डिड यू एक्चुअली वॉच दोस मैचेस लाइव, द एंटायर टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस लीग, द एंटायर टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड कप लाइव? ऑनेस्टली आई वांट टू आस्क यू. क्रॉस के लिए गोल, वो गोल भाई. मिलान भाई, शिटी मिलान हो गई आज. क्वारात्स्केलिया proves why he is Quaradona, bro. मुझे टोपी. Quarazkelia proves why he is called Quaradona. Milan midfield was missing. No one closed him down. What a cut in by Quarazkelia and a shot. Mike Mignon did not have a chance even. Did not even have a chance. एक सेकेंड, गलती किसकी थी सबसे पहले? आई थिंक चुकवेजी की गलती थी, जहां तक मुझे दिख रहा है. चुकवेजी काइंड ऑफ लॉस्ट द बॉल फर्स्ट. Yeah, Yunus Musa or Fofana, where were you? Why didn't that challenge come in? Bhai, Napoli are winning the league, bro. Napoli are winning the league. And Milan, sorry, bhai, apni team will not even bloody be in the top 5. Rubbish. एक सेकेंड, मैं गाइज इतना टची मत होइए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फर्स्ट फोकस ऑन द गोल एंड देन विल कम बैक. रवि, आप बोल रहे हो इतना, आप आ रहे हो इतने रात को कमेंट करो, इसलिए, नहीं तो मैं इतना ज्यादा ड्वेल नहीं करता. 2010 में रिपीट, वेस्ली स्नाइडर के अलावा किसी और को चांस, इतना सा चांस नहीं था. बीट मुलर, बीट इनिएस्टा, बीट रॉबिन, एनीवन. And I'm sorry, the fact is it doesn't make any sense what you're saying. Sorry about it. देखो, अब रॉड्री का भी सेम चीज पूछे भाई, वो मैन सिटी का बेस्ट प्लेयर नहीं था, प्रीमियर लीग का बेस्ट प्लेयर नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी करेक्ट यू देयर अगेन. आई वाज देयर. हम यहां पर खाली स्टैट्स नहीं देख रहे थे. आई वाज देयर लाइव वॉचिंग एज बेसिकली अ फुटबॉल का कीड़ा. प्रीटी श्योर सम ऑफ यू ऑल वर लाइव, लेकिन दे वर वेरी क्लोज अदर्स. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि a certain player not being named a player of the year for that club or the league should not be a benchmark. If one is a mistake, two mistakes, two wrongs don't make one right. Two wrongs don't make one right. Example देता हूं रॉड्री का.
People saying भाई रॉड्री वो मैन सिटी का प्लेयर नहीं था. Have you all seen रॉड्री का ratings in every game? Have you all seen रॉड्री when he's missed मैन सिटी का? मैं रॉड्री का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन does that mean कि if you are a 9.5 out of 10 and you're not a 10 in one league, but your other leagues may be 9.5 where others are not 9.5, you can overtake them? Simple maths bhai, simple maths. Again, it's not about that, it's all about expectations of the reality. No one expected that Dutch team to be in the finals that year, and he carried the Dutch team. And my honest opinion, he carried Inter to that treble. He was very much there, the main guy, the main guy. As much as Milito bhi tha, I get that, absolutely. Defense bhi tha, it's a team sport, but he was the main guy. ठीक है, I am not a Wesley Sneijder fan, just so you know. I don't like him. I don't like him. ऐसा नहीं कि मैं बड़ा फैन हूं, मैं रॉबिन का बड़ा फैन था एब्सोल्युटली. ठीक है, रॉबिन वेस्ली साइड इज अ गुड प्लेयर, बट आई हैव टू बी फेयर, आई एम जस्ट कॉलिंग इट एज इट इज. So there were years where he was shit. There were years where maybe others, deserve. But 2010 में Wesley Sneijder absolutely deserved it. No one is telling me otherwise. We can agree to disagree. लेकिन यहाँ पर agree to disagree. Fonseca agree to disagree that he's a load of crap manager. बाय द वे क्रेडिट टू कॉन्टे ब्रो, कॉन्टे को क्रेडिट. हाफ टाइम हो गया यहाँ पर. लेट्स एक्चुअली एक सेकंड दीजिए मुझे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉज द स्टॉप वॉच. गाइस अगेन बिग अप. इट्स ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर सी. इट्स नॉट इवन रॉकेट साइंस. एग्जैक्टली. आई थिंक पॉपुलैरिटी वोट्स होते हैं भाई, क्या ही बोले, क्या ही बोले यार. अगेन आई टेस्ट एक चीज होती है, बट ठीक है, हम तो घंटा जानते हैं. आई टेस्ट एक चीज होती है, बैठ के देखा है भाई, चाट लिया फुटबॉल. हम लोग थे भाई 1999 से 2024 and for all the reels and the videos and stuff like that, no, I was there bro. You can check it out people. I don't know if you Orkut even exists right now. Literally हर एक गेम प्ले का मैं पोस्ट करता था. लिटरली मतलब चाटू था भाई, चाटू राम था मैं फुटबॉल का. एनीवन हु पर्सनली नोज मी, कांटेक्ट करिए माय बैकग्राउंड एटसेट्रा एंड टेल देम 2010 वर्ल्ड कप मैंने कितना चाटा है पकड़ के. लेकिन Iniesta deserved a Ballon d'Or, absolutely. 2010, it was a calendar year, and 100%, I repeat, Sneijder deserved it. This is not a Ballon d'Or stream, by the way. So let me just move it on. Iniesta was robbed of a certain Ballon d'Or because in general he deserved a Ballon d'Or. But same about Neuer, you can say. That's all my point was. आप लोग इतने टची हो, Ballon d'Or सपने में वही सोचो, Ballon d'Or का अचार बनाओ और Ballon d'Or ही खाओ खाने में. क्या बोलती जनता? नहीं. अरे अंकल शर्मा इन द हाउस ब्रो. अंकल शर्मा, व्हाट्स अप ब्रो, व्हाट्स अप. By the way, I have ranked Inter fifth favorite bro this time to win the Champions League. What's your ranking? I would love to know. Lekin thanks again, always here. Welcome, you know that. On the other hand, Milan, Fonseca bro. You know what Inter क्या किए ना, अपने इंटर सपोर्टर अंकल शर्मा इन दिस हाउस गाइस. सूरज क्या हाल है? नाइस टू सी यू, लॉन्ग टाइम नो सी. भाई जो चीज है ना ये मिस्टर फोन्सेका, अब ये हमने जो खुद सेलिब्रेट, मैंने खुद सेलिब्रेट किया था व्हेन बेसिकली वी वन द मिलान डार्बी. इंटर डिड, इट वाज अ मास्टर गेम प्लान बाय इंटर मिलान. दे वांटेड फोन्सेका इन द जॉब ब्रो, जैसे चेल्सी फैंस वांटेड टेन हाग इन द जॉब, लेकिन साले ने हार का सामना कर लिया इन वेस्ट हैम. आई थिंक नाउ अभी लग रहा है वो दे वांटेड फोन्सेका इन द जॉब. मतलब हु द ब्लडी हेल ही इज, आई डोंट नो. As much as he's Milan's manager and respect, but seriously, मतलब you have a game जहां पर Christian Pulisic has been ruled out from the starting 11. क्यों? क्योंकि उसको stomach bug है. ठीक है, तो he cannot play 90 minutes, that's for sure. Maybe at best half an hour. तो he is out. Already आपके पास है suspended players. अच्छा, गैबिया इंजरी था, fair enough. लेकिन तिजानी रेंडर्स और आपके पास थियो हर्नांडेज है जो सस्पेंडेड है. And Tammy Abraham is also injured. So already you have people जो potentially start करते जो नहीं है. And you are, mind you are on the table. कहां पर हो भाई आप? टेबल दिखा तो आप लोग. You are bloody 8th bro. You are bloody 8th. You have not started the league well. Apart from that Milan derby, you have not started the league well. And then you have the audacity to actually rest Rafael Leao. When Rafael Leao और मिलान को मिला 2 extra दिन रेस्ट. क्यों? क्योंकि बोलोनिया अवे was washed off. It was cancelled, it was postponed. And then center half partnership,
आप चेंज कर रहे हो वापस से. Pavlovic, the guy who was bodied by Liverpool, bulldozed by Lukaku, bro. What a rubbish goal to concede. And then second goal, भाई कोरस के लिए बोलना पड़ेगा, magic of him. लेकिन you can argue Musa probably in Loftus-Cheek should help out Fofana a little bit, or midfield में defensively. On the other hand, Emerson Royal surprisingly has been decent, I must say. That is the only positive मैं बोलूंगा, और कोई पॉजिटिव है ही नहीं इस गेम में मिलान के लिए. यस, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. यस, एक स्पेल आया था जहां पर मिलान ने डोमिनेट किया था और कंट्रोल किया था गेम, बट व्हाट केम अबाउट फ्रॉम इट? नथिंग. घंटा, अचार, लड्डू, अंडा बड़ा वाला, क्या ही कर सकते हैं यार. रवि बोल रहे कॉन्टे विल विन सेरिया एंड लीव नेक्स्ट सीजन, एंड वी ऑल हैव सीन द स्क्रिप्ट पहले. बिल्कुल 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 भाई, ये बैलेंडोर बोल रहा, बैलेंडोर बनाओ, आप खुद बनाओ. मैं भाई आज का ये है अपना असाइनमेंट. सब लोग भाई, बैलेंडोर प्रीमियो, बैलेंडोर बनाओ. द प्रोजेक्ट इज मेक अ बैलेंडोर. ठीक है, उसका ये प्रोजेक्ट है हाउ टू मेक अचार आउट ऑफ इट एंड हाउ टू खाकर पादना कैसे. मतलब सीरियसली मैन, बैलेंडोर का इतना टची हो जाते हैं ना लोग. इट्स ओके ब्रो, इट्स जस्ट अ इंडिविजुअल अवार्ड, इट्स अ टीम गेम. वी शुड बी इतना टची होना चाहिए अपने टीम के लिए भाई. इतना टची अपने टीम के लिए नहीं होते. व्हाई? आई डोंट अंडरस्टैंड. सूरज बोले भैया, इफ Fonseca is sacked, will you take Ten Hag at Milan? That's a good call. You know what? It might actually work. It might actually work. Trust me, it might work. Tijani Reinders, again, a Dutch person is there, might have some connection. I don't know. Pretty sure यहाँ पर there will be some connection also, जो हम हमेशा देखते हैं Dutch football in Milan का. But on the other hand, I think what he couldn't live up to the expectation in Manchester United was probably the fact कि वो style of game play imprint नहीं कर पाया. Yes, injuries थे last season especially, but come on, I think with the pace of Serie A, that's not a bad choice in my opinion. Yeah, as I called it exactly. Evolution Gaming Lux, क्या हाल है भाई? Missed your comment, sorry. What's up? नहीं, ये डिबेट का पॉइंट था ही नहीं, by the way. It's not even a point. If you're getting a debatable point, fair enough. This is not a debatable point, मेरे भाई. You bring positive debates, हम करते हैं भाई. 1,500 वीडियोस किए, उसमें से 1000 लाइव्स होंगे. आप देखो, हम डिस्कशन भी करते, प्यारा भी करते. वी गेट एजिटेटेड भाई. एट द एंड ऑफ द डे टची क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि मैं आपको समझना चाहिए, आई एम नॉट अ स्नाइडर भक्त. आई एम नॉट अ भक्त जनो नहीं हूं मैं, नहीं हूं स्नाइडर का. वो पॉइंट था ही नहीं. तो एनीवे, लेट्स check that and let's move on. Napoli is winning the league. Yeah, not bad. Debanjan. अरे भाई, नाइस वन. लेकिन गाइस, मिलान को क्या रिस्क लेना चाहिए? स्टमक बग था पुलिसिक को, तो आई डोंट नो, बीच में आई नो इट्स ग्रोस, बट बीच में बेचारे को बाथरूम जाना पड़े तो क्या होगा? या फोंसेको, लियाओ के पर्सनल इश्यूज है इसलिए इज नॉट स्टार्टिंग. दैट आई नो रवि, एग्जैक्टली आई नो दैट, बट श्योरली मतलब मस्ट, दिस इज नॉट. चलो मैं अंडरस्टैंड करता अगर बोलोनिया अवे होता और वो उसको रेस्ट कराता, आई गेट इट. बट दिस इज अगेंस्ट द लीग लीडर्स, दिस इज अगेंस्ट द पोटेंशियल मतलब चैलेंजर. अब तो भाई फेवरेट्स फॉर द टाइटल है, करेक्ट? तो वहां पर एट होम जब आप 8th हो, डेस्परेट सिचुएशन ना, यू कैन नॉट, यू नीड टू हैव अ टॉक एंड योर बी अ मैन वाला चीज होना चाहिए भाई. सिंपल सी बात है. पर ठीक है, क्या ही कर सकते हो. नहीं बिल्कुल, इनिएस्टा वाज डिजर्विंग बट नॉट इन 2010. आई रिपीट दैट. मैं उस पर ही अड़ा रहूंगा बिकॉज मैं देखा था भाई हर एक मैच, और मुझे अड़ा रहना है. मैं देखा था, आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग, एग्जैक्टली व्हाट आई एम स्पीकिंग, और अड़ा रहना है. Iniesta deserved a Ballon d'Or, 100% deserved a Ballon d'Or, 100% deserved a Ballon d'Or, but not in 2010. That's my point. I think I'm totally fair because I'm not a Schneider Bhakt. You are an Iniesta fan, so you are biased, if I'm honest about it. ठीक है, लेकिन big up, love you, and let's move on. I hope you can respect that. Fair enough. Big ups to all. Yes, Ballon d'Or or just turned like joke. Don't know what they exactly want as a City fan. Rodri was good. Rodri was totally deserved it. No one is arguing that. कोई है यहाँ पर बोल रहा है Rodri did not deserve it. Rodri totally deserved it. But can you say Vinicius did not deserve it? No, we cannot say that. So the point being that the treatment of the entire thing became a drama. वो ड्रामा की जरूरत नहीं है. That's all. Ballon d'Or is a farce भाई. इतना टची मत हुआ करिए भाई. It's okay. अभी नहीं, खत्म नहीं हो गया विनिशियस का करियर. यस, रॉबरी है फॉर हिम, ऐसा फीलिंग होगी, लेकिन रॉड्री को नहीं बोल सकते कुछ. जस्ट लाइक हालैंड
people say he was robbed, but no, Messi totally deserved in that year, in my opinion. नहीं, मतलब यहाँ पर मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ, जॉर्जिनो बोलेगा भाई मॉड्रिच को दे दिया, रॉड्री को दे दिया, मुझे क्या, मैं क्या लड्डू बना रहा था क्या पूरे साल? क्या मैं यूरोज जीता, मैं बेसिकली चैंपियंस लीग जीता, और आई वाज एवर प्रेजेंट इन द मिडफील्ड, आई वाज अ लीडर, जस्ट सेइंग. तो एट द एंड ऑफ द डे हर साल होता है, हर साल कुछ ना कुछ डिबेट होगा ही. वी कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, बट समटाइम्स इट्स क्लियर रॉबरी, समटाइम्स इट्स नॉट. वो है, दैट्स डिबेटेबल एट बेस्ट. ऑजिमन का क्या होगा? रवि बोल रहे हैं नापोली तो जाएगा नहीं, विल ही स्टे इन द टर्किश लीग. सुनने में तो आ रहा है दैट वी आर टेक्निकली स्टिल इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ स्ट्राइकर. थोड़ा बहुत आई थिंक जूरी इज आउट वाला मामला एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन सुनने में आ रहा है दैट मे बी अगर हम रहते हैं इन से थर्ड फोर्थ स्पॉट, आई थिंक वी माइट एक्चुअली इन्वेस्ट दैट एक्स्ट्रा इन जनवरी. क्यों? क्योंकि एक और रीजन अभी ये भी है. फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आई नो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नॉट इन चैंपियंस लीग रवि, सिमिलर लाइक अस, बट the fact is that a new manager vibe, anyone coming in, तो हो सकता है they might go for some players as well. So we have to be careful in the market or be aware. But again, I'd be really surprised अगर Osimhen वहीं पर पूरा सीजन बिताता है. The way Vinny and Real has acted is just laughable, just because Ancelotti ने फर्स्ट क्रिएट कर दी. Ancelotti, ये फर्स्ट वाला छोड़ो शोभित. How many of you also Ancelotti's tweet? Ancelotti is one of the GOAT managers मेरे लिए, by the way. ये पहले बोल देता हूँ. मिलान, चेल्सी, भाई ग्रेट, ओके फॉर मी. Ancelotti ने ट्वीट किया, भाई थैंक यू टू माय प्रेसिडेंट, थैंक यू फॉर ये वो बैलन डोर फ्रांस फुटबॉल को थैंक यू नहीं किया. दैट आई टोटली गेट इट, टू पिस्ड ऑफ है बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड, हाउ विनिशियस न्यूज़ वाज ट्रीटेड. लेकिन ही थैंक्ड विनिशियस जूनियर, सुनो, एंड कार्वाहाल. मतलब ironically saying that Vinicius Junior और Carvajal deserve ज्यादा करते थे award as well. Ballon d'Or obviously is referring to, right? तो does that mean that Jude Bellingham deserve नहीं करता था? Does that mean that Toni Kroos deserve नहीं करता था? According to Ancelotti, यहाँ पर खुद के घर में ही थोड़ा सा कलेश हो जाएगा मेरे ख्याल से. Just saying. It seemed funny. He's like, I thank you the president. I thank you. पता नहीं if it's a real account. I thought it's a real account of Ancelotti Twitter पे. और he thanked क्या बोलते हैं अपना Vinicius Junior or Carvajal, and he forgot to thank in the tweet Bellingham and rest of the team, basically, especially Cruz, क्योंकि वो लोग Ballon d'Or top 10 में थे. I always trust what you say, but Zirkzee is a scam. नहीं, scam नहीं है. Play him in the right position, he'll do good. He's not your main striker. Zirkzee अभी इस पॉइंट पर है जो निकोलस जैक्सन लास्ट सीजन था चेल्सी के स्पॉट पर. समझ रहे हो ना? तो ही विल ग्रो इनटू अ स्ट्राइकर इवेंचुअली, यस, इन द प्रीमियर लीग, लेकिन प्ले हिम एज अ सेकंड स्ट्राइकर. ही इज योर सेकंड स्ट्राइकर, सिंपल. आई वाज दैट फर्स्ट वन टू कॉल आउट Zirkzee वाज अ स्कैम, ही इज नॉट अ प्रॉपर 9. हां, नंबर 9 के लिए स्कैम बोल सकते हो, बट ही इज नॉट अ बैड प्लेयर भाई. आई डोंट थिंक, not the best player, matlab you can enjoy, probably you can say is underrated. That's a good point by Abhishek and Suraj, but I genuinely believe that he's not as bad as he's got a silky touch, he's got a presence in that, in behind the striker wala zone, or plus एक footballing IQ definitely है उसके पास. एक second, meanwhile अच्छा मैं देख रहा हूँ गाइस, शुरू नहीं हो ना गेम गाइस. सेकंड हाफ में व्हाट चेंजेस विल यू ब्रिंग? विल यू रिस्क पुलिसिक राइट नाउ, राइट अवे? 2-0 डाउन है. ऑफ कोर्स थैंक्स टू Pavlovic hugging against Lukaku, who did really well, and Kvaratskhelia doing his Kvaratskhelia things. Fair point, Debanjan. Loans Zirkzee to Juve seem okay, good under Mota. बहुत जल्दी है लोन के लिए, थोड़ा इन्वेस्ट करो टाइम. यू नेवर नो हाउ. अगेन पीपल, वी आर ऑल थिंकिंग रूबन एमोरिम खेलेगा 3-4-3. वी डोंट नो. टुकल जब चेल्सी आया था, बेस्ड ऑन द स्क्वाड ही चेंज्ड द वे चेल्सी प्लेड. ही यूज्ड टू नॉट प्ले 3-4-3, 3-4-2 नहीं खेलता था टुकल. बैक इन पीएसजी बहुत कम खेलता था बहुत कम खेलता था. 4-3-3 यूज्ड टू बी हिज थिंग. बीट इन पीएसजी, बीट इन डॉर्टमंड बिफोर दैट. सूरज, आई विल बी रियली सरप्राइज्ड ब्रो दैट आप दोनों को पुल कर लोगे. आई नो देयर इज अ पोर्चुगीज कनेक्शन, लेकिन ग्योकरेश तो स्वीडिश था, तो आई डोंट थिंक वो होना चाहिए. लेकिन विक्टर लिंडलॉफ माइट टॉक टू हिम ब्रो, लेट्स सी. बट हाँ, अभी चैंपियंस लीग में है यार ग्योकरेश, लेट हिम फ्लाई मैन. ही, एंड विद ऑल डू रेस्पेक्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, द बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड, अभी भी मैं बोलता हूँ टेक्निकली, बट
अभी के लिए राइट नाउ ग्योकरेश का लेवल इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस लीग लेवल है राइट नाउ, एंड इवन एज अ चेल्सी फैन आई एम सेइंग इट. Ballon d'Or will always be debatable because you can make case for more than one player. Exactly. That's a good point. And also, you don't play many second strikers in Premier League. That's a good point by Abhishek again. Always. ETH का भी एक सेकंड, ये दिवांजन बोल ETH का भी सेम हाइप था. मैं वही बोल रहा हूँ आज की वीडियो में. गाइस अगेन वी हैव रिलीज्ड अ वीडियो इन द मॉर्निंग. बाय द वे, let me know if you're interested to get a tactical. Are you guys interested in getting a tactical video, what to expect and what 11 to expect from Manchester United under Amorim? From me, let me know. Tomorrow maybe we could discuss it live. Do you want it live or a video? Let me know. I'll work on it. Although आज रात तो थोड़ा हेक्टिक हो गया, तो I wasn't able to record yet. Vinicius versus Rodri छोड़ो, भूल भुलैया 3. भूल भुलैया 3 ब्रो. सिंघम वाला मैं ज्यादा फैन नहीं हूँ. सिंघम फैन हो क्या आप लोग सब? पता नहीं यार, मतलब आई नो थोड़ा कॉमेडी लगता है, लेकिन इट्स फोर्स्ड कॉमेडी फॉर मी. आई डोंट लाइक सिंघम. आई नो एक्शन, वो हीरो लार्जर देन लाइफ वाला चीज आई लाइक इट जनरली, बट सिंघम इज अ लिटिल बिट ओवर द टॉप. भूल भुलैया 3, या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड भाई. मैं रिसेंटली वो देखा था यार, अपना नाले बा वाला. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल इन बैंगलोर? अरे वो क्या नाम है, स्त्री टू देखा था मैं. आई वॉच 3 पार्ट 2. आई थॉट इट इज हाइप्ड. पता नहीं आप लोग कहाँ देखे हो. स्ट्रीट वाज रियली हाइप्ड. आई थॉट ज्यादा हाइप कर दिए लोग. द वे यू टॉक इट्स गिव्स मी द फील दैट यू आर वेरी ओल्ड फुटबॉल फैन. यू आर मैच्योर ब्रो. आई डोंट नो अबाउट ओल्ड एंड ऑल, बट आई डोंट नो, इट्स सब्जेक्टिव ना. सो आई एम वाचिंग पहला गेम फुटबॉल का देखा था 1994 वर्ल्ड कप में, इफ दैट मींस एनीथिंग. दैट वाज द फर्स्ट गेम ऑफ फुटबॉल आई वॉच्ड, आई एम प्रीटी श्योर. और दैट वाज इंटरनेशनल फुटबॉल. क्लब फुटबॉल आई थिंक आई स्टार्टेड वाचिंग एकदम थोड़ा बहुत. आई थिंक 98 types I started watching club football after the 98 World Cup. लेकिन week in week out only after 2000. Amrim को wing backs चाहिए. I think we need to back him in winter. मैं वही बोल रहा हूँ ना. I don't think you have the squad right now for Amrim. मैं आज की वीडियो में वही बोला. In my opinion, it may not really fit to the T right away. तो आपको टाइम देना पड़ेगा. You cannot expect overnight success, जो कहीं ना कहीं टूकल ने दिया था, कॉन्टे ने दिया था विद चेल्सी, और अभी स्लॉट दे रहा है विद लिवरपूल. आई थिंक इट विल टेक टाइम. लेकिन कैन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब बी पेशेंट? जो हमारा भी सेम टास्क था विद एंजो मरेस्का. आई थिंक दैट शुड बी द बिगेस्ट थिंग. लेकिन कोई नहीं गाइस, सेकंड हाफ इज स्टार्टिंग. होपफुली वी गेट एन अर्ली गोल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो गेम गया. Being a Spanish club, Real Madrid doesn't congratulate. This I think is a problem. I think they are at fault. I would like to call out Real Madrid. You are absolutely bang on, Ashutosh. I think this was definitely not on. Rodri would have. I don't think he cares, but I think ideally they should have absolutely agreed. Street to overhyped. इट्स ओके ब्रो. ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था टॉप 10 में. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड उसके शर्ट नंबर 20th पोजीशन. ऑनेस्टली इट्स ओके. मतलब ठीक है. अब डिफेंडर्स और स्ट्राइकर्स को आप और विंगर्स को आप कंपेयर करो तो क्या ही तो बोले. गाइस 46-25 में हम करेंगे वापस से. याद दिला देना कोई, फिर केस आई फॉरगेट अराउंड 46 मिनट प्लीज. अभी मेरा शुरू हो गया गेम. 45-27, 45-28, 45-29, 45-30 है. Predictions होता है in the chat, guys. Will Milan score an early goal and come back? As Suraj has come back to ABFC fam. Welcome back, Suraj. Always welcome. You know that. लेकिन सब लोग लाइक भी कर दीजिए. Absolutely helps. Thank you, Ashutosh and all the others here. चलो यार, कॉर्नर जीता है चुक्वेजी ने early on. Come on, Milan. You need an early goal. Very crucial, भाई. 46-25 में करना मैं रेडी रखता हूँ. By the way, यहाँ पर शॉर्ट कॉर्नर खेला है. ट्रेनिंग ग्राउंड रूटीन लग रहा है, विच अभी तक फ्लॉप लग रहा है. कॉर्नर वेस्टेड लुक्स लाइक इट. अरे नहीं, फार पोस्ट माय बॉल. अरे गोल हो गया यार. कम ऑन, यस, कम ऑन मैन, कम ऑन. दैट इज इट ब्रो. मोराटा स्कोर्स अगेंस्ट कॉन्टे गाइस. वाओ. चुक्वेजी कीपिंग द बॉल इन प्ले फार पोस्ट में, एंड इट इज एन अर्ली सेकंड हाफ गोल. एग्जैक्टली व्हाट द स्क्रिप्ट वांटेड ऑफ मिलान वर्सेस नापोली, एंड मिलान आर बैक इन द गेम. Alvaro Morata with a header at the far post. Meret should have probably been there, but Chukwueze OP bhai kept the ball in play, and what a header, glancing header by Morata. Come on bhai, come on. Forza Milan in the house ho jaye. All the members, let's spam those Giroud emojis. Yes,
still belongs to Milan for me. So let's have it in. Let's have it in. अने बोल रहे मी टू. मैं तो लियाओ वर्सेस क्वाड्राडोरा का क्लैश, हाँ वो आएगा, लियाओ आएगा. ही इज ऑन द बेंच आई गेस, राइट? एटलीस्ट पुलिसिक एंड लियाओ और आर ऑन द बेंच, करेक्ट? या दोनों है बेंच पर. भाई चेक हो रहा है, क्या चीज का चेक हो रहा है? इट्स अ गोल ब्रो, इट्स अ क्लियर गोल. व्हाट्स रबिश? क्या? he just rose and he put a glanced header. Clearly defender was behind Morata. No way man, no way bro. Is it offside? जब क्रॉस खेला गया, इज कमिंग बैक फ्रॉम एन ऑफसाइड पोजीशन, हो सकता है. नहीं यार, दिस मूव डिजर्व्ड अ गोल. कम ऑन, श्योरली डिजर्व्ड अ गोल. ऑफ दे रहे भाई, लग रहा है. पोर्चुगीज लीग आई हैव नॉट वॉच्ड लाइव रिसेंटली दो. कम ऑन, गोल कर दो भाई, गोल. साला ऑफसाइड दे रहे. Conte is winning the league bro again. Morata offside, coming back from offside position. पूरा मेहनत और चुकवेजी went to dustbin bro. Morata is not surprised, जुनेद बोल रहे. Morata या उसका offside है. Remember कितना frustration देता था. शी यार, I would love to man. Abhishek, again it's a no brainer कि we need an experienced leader at the back. गोलकीपर मुझे एक दे दो और डिफेंडर दे दो, लेकिन गोलकीपर में इतना इन्वेस्ट कर दिया हम लोग ने कि भाई वी आर जस्ट गोइंग टू वेट फॉर पेट्रोविच टू इंप्रूव एंड कम बैक. आई गेस दैट्स द रियलिटी, वेदर वी लाइक इट और नॉट. ऐसे ही लग रहा है मुझे. डिफेंडर में डेफिनेटली आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज वो फेसली फोफाना हर गेम में एक मिस्टेक कर रहा है. मच एज 80 मिलियन हमने पे किया उसके लिए. लीवाई कॉलिल बाय द वे इज गुड. बाय द वे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो. आज ही मैं देख रहा था कुछ तो रैंकिंग्स. एक सेकंड, लेट मी सी इफ आई कैन पुल इट अप. Guys, people, you might be shocked as much as मैं अभी थोड़ा सा, एक सेकेंड, 49, मैं थोड़ा टाइम स्टैम्प ठीक कर देता हूँ मेरा. ओके, एक सेकेंड दीजिए. आई एम जस्ट मेकिंग श्योर मैं टाइम स्टैम्प अलाइन कर दूँ. मैंने जबरदस्ती ऑन कर दिया था क्योंकि गोल हो गया था, ऑल्दो इट गॉट डिसअलाउड लेटर. चलो मैंने शुरू कर दिया टाइम स्टैम्प गाइस अगेन. हाँ, हर एक डिफेंडर करता है, लेकिन आई थिंक फिर भी रिलायबिलिटी फैक्टर में मैं सबसे कम पॉइंट दूंगा अभी राइट नाउ. Right now in a back four defensively, Gusto and Fofana, if I'm honest. Defensively बोल रहा हूँ. लेकिन अभी रीच जेम्स इज बैक, so Touchwood is chase fit, at least a right back, but center back में Tosin not really. भाई फार पोस्ट में क्रॉस आया ओकाफोर का, लेकिन क्लियर्ड फॉर अ कॉर्नर यहाँ पर बाय ओलिवेरा, लेफ्ट बैक ऑफ नापोली. एक सेकंड, मैं कुछ मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ गाइस. आई एम जस्ट लुकिंग अप फॉर समथिंग दैट अभिषेक रिमाइंडेड मी. Big up to Abhishek for doing that. भाई 125 लाइक्स बनने चाहिए गाइस. कम ऑन. बिग अप्स टू आशुतोष फॉर रिमाइंडिंग द चैट. लेकिन यहाँ पर अगेन कॉर्नर वेल टेकन. धावा तो बोल रही मिलान, बट टू नो अवेल, लुक्स लाइक इट. भाई एक स्टैट देखा है मैंने, पता नहीं रियल है कि नहीं. इट्स क्रेजी ब्रो. वर्जिल वैन डिक, कोनाटे, गैब्रियल और सबसे ऊपर है भाई यहाँ पर बंदा परफॉर्मेंस इंडेक्स. आई डोंट नो व्हाट बेसिस, बट प्रॉपर है. वेबसाइट मैंने चेक किया है. तंजिल बोल रहे हैं हाउ डिड मिलान फेल ऑफ दिस हार्ड. तो देयर वाज बेसिकली ऑब्वियसली द सेट ऑफ सीजन जहां पर वी लॉस्ट ऑल आवर लेजेंड्स एंड देन वी इन्वेस्टेड क्रेजी मनी व्हिच वाज मिसयूज ऑफ मनी बोलते हैं ना, वो प्रॉपर था. तो didn't live up to the expectations. फिर again people like Thiago Silva, Zlatan etc left. तो that cycle exactly started और बहुत ही difficult था. I thought Napoli are the one season wonder 2 seasons ago, but they can. It's Conte. They will do better, but I would still say midfield में they're missing one man. I don't see they could play exactly the same. मुझे नहीं लगता Kobe Mainu will have trouble in my opinion. People might be surprised. आप लोगों को कितने लोगों को याद है
Fabregas, although we won the league with Fabregas being there, लेकिन 2016-17 में it was Matic and Kante more than Fabregas in starting 11. मैं बोल रहा हूँ जैसे खेलता है ना रूबन एमोरिम, एटलीस्ट इन क्या बोलते हैं स्पोर्टिंग, he kind of is a manager who genuinely, for him the number one aspect is the work rate. वर्क रेट इज द नंबर वन एस्पेक्ट. प्रेसिंग, वर्क रेट, वो सब है. तो वहां पर आई डोंट थिंक माइनो इज एब्सोल्युटली बेस्ट. ही इज प्रेस रेजिस्टेंट, वाओ, लेकिन प्रेसिंग नो, वर्क रेट हिमसेल्फ नो, डिफेंसिवली नो. तो वहीं पर जैसे कॉन्टे वर्सेस फैब्रिगास वाज इन द बेस्ट कॉम्बिनेशन. लॉफ्टस चीक ऑन द राइट हैंड साइड, गोल कर ले. अरे नहीं यार, हाउ डिड वी स्कोर? कट इन किया यार, क्यों भाई? You should have just scored, guys. But again, probably there were two people coming on, लेकिन मोराटा के पीछे गया बॉल. यहाँ पर लुकाकू बॉडिंग, बुलडोजिंग पाव्लोविच yet again, जिसका आंख ऑलरेडी इंजर्ड है और आंख टूट गया लगता है. Luckily we got a free kick. Bruno also might have done. हाँ, I agree with you. I don't think he will play the same system. Guys, again, Anish in the house, I support mainly Chelsea, लेकिन obviously I have a soft corner for Milan, AC Milan, that is, Bengaluru FC as well in terms of clubs. लेकिन it's a fan channel for all to see. We cover all content, not just here but also on Almighty Sports जहाँ पर cricket है. Doug in the house, Doug OP man, people check him out. Mino will improve. Yeah, he will improve, but what I'm trying to say, it'll take time. मैं वही बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ खत्म है. It'll take time. So are Manchester United fans and the owners ready for it? Do you think Fonseca is the guy for the job? Absolutely no. Absolutely no. एक मिलान डाबी के दिन मैं बोला था खाली वेयर माफी मैंने ऐसे किया था. आप देख सकते हो मेरा रिएक्शन. Apart from that, I'm never happy with the entire season. लिवरपूल के साथ भाई हगा. आप देख सकते हो ना the games. I thought Napoli are the one, ले लिया था मैंने. Rashford तो गया under Amorim. For all we know, he might, I don't know how many of you all think that, he might play a 3-4-1-2. I have a feeling. Arey, Doug, I saw your post, bro. Big ups to Doug, man. Doug has hit 3K. Let's get him to 4K as well, guys. The Dugout Football channel, and us to 14K as well here. And 6K on Almighty Sports. Can Alphonso Davis' left wing back work in सूरज सपने मत दिखाई वाला सिस्टम. अल्फोंसो डेविस क्यों आएगा भाई वहां पर? With all due respect to Manchester United, I get it, वो खेल रहा है अंडर कंपनी, बट क्यों आएगा भाई? नहीं आएगा यार. बायर्न म्यूनिख चाहे कितना भी बुरा करे, और बाय द वे लीग में तो अच्छा कर रहे हैं. बायर्न म्यूनिख को चैंपियंस लीग मिल रहा है वापस से, और इनफैक्ट रियल मैड्रिड ऑलरेडी इन टॉक्स, आई बिलीव. करेक्ट? अल्फोंसो डेविस क्यों आएगा भाई? अनलेस यू गेट चैंपियंस लीग फुटबॉल, जो मुझे नहीं लग रहा है दिस पॉइंट इन टाइम, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. हाँ, मे बी इफ यू हैव टू रियली थिंक, एक एग्जांपल आप सोचो, मतलब कैसे, क्या कौन सा एग्जांपल बोलूं मैं? मतलब a top fullback, top wing back who's basically not expecting Champions League football. I think someone like, say, from Aston Villa might still come, because वहां पर है आपका, of course, अपना ही प्लेयर था भाई, इयन मार्टसन. एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एज एन एग्जांपल, रैंडम. एक और डच प्लेयर नहीं आने वाला अब तो भाई, दैट डच मैनेजर इज नॉट देयर, बट फॉर एग्जांपल इयन मार्टसन, क्योंकि एस्टन विला में डिस्पाइट गोइंग देयर, ही इज प्लेइंग starting only every alternate game, not starting every game. Yeah, maybe Luca Dino, someone like them, जो चैंपियंस लीग फुटबॉल खेल रहे हैं अभी, but they are still at Aston Villa. लेकिन if someone is playing Champions League football and already at Bayern Munich, why would they move to Manchester United right now? Lukaku almost scores, guys. What is this? छक्का मार दिया luckily. Exactly. सूरज बोल रहे हैं इनियोस आर ट्राइंग टू कन्विंस हिम. देयर आर रिपोर्ट्स फ्रॉम प्लेटिगोल एंड रिपोर्ट्स, तो भाई नवंबर तक रिपोर्ट्स को मानो मत भाई. लियाओ का आई बिलीव पर्सनल इश्यूज है एंड मेंटली नॉट देयर एक्सेट्रा, बट आई थॉट ये गलती है फोंसेका की, रबी अख्तर, बिकॉज ऑलरेडी वी आर हैविंग 2 सस्पेंशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो टियो हर्नांडेज अपना कप्तान है, एज वेल एज रेंडर्स जो ड्रिफ्ट करता है वहां पर कभी कभी, are missing. So how can we not afford to play Rafael Leao as well in a must-win game at home in a 6-pointer, especially जब आप खेल रहे हो against league leaders and you are 8 and now losing 2-0 and still he is not on. Wow. Happy for Gilmore to play regularly in that 6th position. I think generally आप बोल सकते हो Italy has been a lot of English-based players के लिए a good
consolation prize. Nothing against anyone, and it's good. लेकिन लॉफ्टस चीक को इतना गेम टाइम नहीं मिलता if he was in a top team playing in Champions League in England. As much as I should really like the player before his major injury, I must say. Gilmore the same. Uh, McTominay the same, arguably, right? Tomori the same. लेकिन हैप्पी फॉर देम एज वेल. गर्नाचो को भी प्रॉब्लम होगा, इज वेरी अनअवेयर. गर्नाचो ठीक है, वेरी, देखो, ही इज अ विंगर आफ्टर ऑल, राइट? सो यंग विंगर्स कैन स्टिल लर्न. लुकस वास्केज राइट बैक बन गया यार, राइट विंगर से, जस्ट सेइंग. अभी बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन एट वन पॉइंट ही वाज यंग. विक्टर मोजेस प्लेड विंग बैक ब्रो फॉर चेल्सी. If you have it in the manager, you can convert them. Fair enough, and they can be offensively good. Wing back मतलब ये नहीं है you're just defending. Victor Moses contributed a lot of goals, I believe, in that season. Just example दे रहा हूँ. Obviously Garnacho का तो next level skill है, but you never know. Again, I feel they might play a 3-4-1-2. I'm giving it away. I wanted to do a video. Maybe I'll do it live tomorrow. यहाँ पर Kvaratskhelia are doing brilliantly, winning a corner, guys. Casemiro, Eriksen, ये लोग under Amorim will not see often. I think Casemiro might. You might be surprised, Suraj. Reason being क्योंकि again 3-4-1-2 मैंने बोला है, तो that one kind of does a lot of work rate, or that one obviously is Bruno you're talking about. तो 3-4-1-2 में Bruno, Casemiro and Ugarte might actually be that midfield. Simple. लेकिन वो 4 में वही है, मतलब you need to basically invest in a wing back. Delict, Euro, Lisandro, Mazraoui. Actually, Mazraoui can play that wing back system. Yes, he could be the wing back. Good one. खेलने के तो डालो भी तो खेलता ही था पोर्चुगल के लिए. Which match was that भाई? यूरोज में फ्रांस के अगेंस्ट जहां पर खेला था. I believe Cancelo was taken off and Dalo came on as a wing back or something. I remember that game, and he played entire extra time or the other way around. तो खेलने तो खेल सकते हैं, लेकिन हाँ, मेसन माउंट, लॉट ऑफ पीपल आर पुटिंग मेसन माउंट बिकॉज द वर्क रेट ही हैज. भाई लॉन्ग टर्म इंजरी 2 बार हो गया उसको, सो वेट एंड वॉच. एंटोनियो वेलेंसिया इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल by Chinmay. Yes, exactly, became a right back from a winger. Ashley Young also. Ashley Young, Antonio Valencia, Lucas Vasquez. These are some examples. Victor Moses. भाई यहाँ पर बिल्ड फ्रॉम द बैक देखा है आप लोग ने नापोली का? वाओ, ये क्या है? Watching Saints versus Stoke for Leslie. He's having a decent game, but he's not playing regularly. He should be called back from his loan. Oh, बिल्कुल. Ugochukwu basically. Oh, what a glance header by Lukaku, bro. Kvaratskhelia भाई 1 against 1 है. McTominay ने छक्का मार दिया, luckily. This is crazy, man. On counter, Napoli are too good. But anyway, coming to this, I totally agree with you. Leslie Ugochukwu, मैं सोचा था he would be the main man for Southampton. He's nowhere close. Aston Villa are good, yes. हाँ, ये भी है ना. हाँ, अपना कल है मैच. Obviously, we'll cover it along with other matches, Carabao Cup के. लेकिन आज कौन से मैचेस चल रहे हैं भाई? Southampton Stoke 2-2 है. Brentford Sheffield Wednesday 1-0 है to Brentford. By the way, अगर फुल टाइम में बराबर रहता है, it goes to penalties. Remember, I believe so. Anthony is left wing back. You know what? You have a thing. You know, you never know. You just never know. You just never know. If he does that, wow. It's still far off, Rabi, in my opinion. Being a Serie A watcher from the years, but ठीक है. Yildiz, I think eventually will probably land up somewhere else. Again, you cannot say a lot in Serie A. बहुत बार लगते they better than what they are. Okafor wins a corner. Referee बोल रहा नहीं, मेरे को मन नहीं है देने का. क्या है? हाँ, but Yildiz is someone जो मुझे लगता है that he has even one more gear to him. Yildiz, I think I would like him to see जो मैं बोला ना 3-2-4-1, 3-4-1-2 वाले systems में. In such teams he would he be awesome, bro. Give him that inside space ज़्यादा.
Lukaku, bro. Ritam in the house. Long time. I wanted to inform that I have completed my MBA from Imperial College London and just landed in India for Diwali. Recently went to the bridge to watch Chelsea. What a game, भाई. मैंने आपका देखा था, आपने पोस्ट किया था शायद. करेक्ट करेक्ट. मैंने शायद लाइक भी किया, if I remember right. Definitely. I think I would have been multitasking, but I didn't get a chance to comment or message you, bro. Big up to you. Rafael Leo comes in, guys. Finally, Rafael Leo comes in. Okafor goes out. लेकिन कंग्रेचुलेशन रितम, ऑलवेज वेलकम, आप जानते ही हो ऑन बोथ द चैनल्स. आंड्रे सैंटोस, या हाईएस्ट स्कोरिंग मिडफील्डर, हु वुड हैव थॉट दैट. प्लस उसका गेम प्ले एंड वर्क रेट इज आल्सो गुड. पुलिसिक भी आया मीनवाइल. पुलिसिक इज आल्सो कम, गाइस. Kvaratskhelia almost putting in. Pulisic, एक second, trying to win the ball back unsuccessfully. Oh yes, Yildiz is the top player. हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ इसके बारे में काफी. मतलब आई जस्ट सी फॉरवर्ड्स एटसेट्रा. आई हैव नॉट रियली वॉच्ड देम लाइव, इफ आई एम ऑनेस्ट, रिसेंटली. लेकिन हाँ, आई ट्राई एंड वॉच द हाइलाइट्स एज मच एज पॉसिबल, लेकिन नॉट एवरी टाइम पॉसिबल रहता है. लेकिन आई हियर यू. अरे नाइस ब्रो, नाइस, एंजॉय मैन. आप रितम हो सके तो मतलब यू कैन मेक, आई डोंट नो, शॉर्ट वीडियोस, मे बी शॉर्ट क्लिप्स एंड सेंड अस, ब्रो. आई वुड लव टू गिव अ शाउट आउट एंड कवर इन द नेक्स्ट लाइव. आज हम ऑलमाइटी स्पोर्ट्स में किए थे लाइव, बाय द वे. आईपीएल टॉक्स बिग टाइम बैक. As a rival, what do you think are realistic expectations be from Amorim? Domestic trophy, top six. Top six, honestly, with like similar to Poch. तो लास्ट सीजन हमने एक्चुअली अचीव किया. वी अचीव टॉप 5 एंड टॉप 6 थे ना, 6 थे ना हम लोग, 6 थे. तो वी अचीव टॉप 6 एंड वी रीच्ड फाइनल. वन फाइनल, वन सेमीफाइनल एंड टॉप 6. आई थिंक सच काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन. यहाँ पर राफेल लियाओ फेंडेड ऑफ इजीली. क्या हो रहा है भाई? मिलान में खाना नहीं मिल रहा है क्या लोगों को? पैवलोविच गिर रहा है, राफेल लियाओ मतलब आराम से बेसिकली फेंडेड ऑफ. सीरियसली, डी लोरेंजो ने. वाओ. स्कॉटिश. ओ हाँ, मैकटोमिने, दोनों स्कॉटिश है ना. राइट राइट, आई जस्ट रियलाइज. व्हाट अ ट्यूबलाइट अंकित इज, ब्रो. दैट्स मी, बाय द वे. यूवेंटस टॉप 5 कंटेंडर्स इन चैंपियंस लीग दिस ईयर. पुलिसिक का वाओ, ब्रिलियंट डिलीवरी, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा क्लोज टू द गोलकीपर एंड इजीली कॉट बाय मेरिट, बट कोई नहीं. टॉप 5 आई वुड नॉट पुट दैट, शोभित. टॉप 7-8 यस, टॉप 5 नहीं. एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं. Juventus have also been not there or thereabouts. In fact, Juventus are a team जो Champions League में बहुत underwhelming रही है. They should have achieved more as a club, in my opinion, at least in this century. गौरव पूछ रहे क्या लगता है अंकित, क्या एमरिम यूनाइटेड वापस ऊपर ला सकता है? बिल्कुल, लेकिन क्या पेशेंस है यूनाइटेड को टू डू दैट? विल यू री इन्वेस्ट? क्योंकि एरिक टेन हाग ने बहुत पैसे खर्चे थे. इट डिपेंड्स ऑन इनियोस. प्रॉब्ली आंसर इज यस, देन नो. पॉजिटिव रहना चाहिए. लेकिन आई थिंक डोंट एक्सपेक्टिंग टू प्ले एग्जैक्टली द सेम जो खेला है स्पोर्टिंग के साथ में. करंट पर्सनल में आई थिंक देयर विल बी सम इश्यूज. ही माइट ट्राई एंड कन्वर्ट फुल बैक्स टू विंग बैक्स एटसेट्रा, लेकिन और ज्यादा डिफेंसिव लगे आप लोग को टीम, लेकिन आई थिंक गोल स्कोरिंग में अभी भी मुझे लगता है इश्यूज होंगे. मे बी रैशफोर्ड प्लेज अप टॉप विद जर्क्सिया, अगर 2 मैन फॉरवर्ड चाहिए तो. अच्छा क्रॉस आया. मुराटा just about diving but did not connect, guys. Why is Pep so successful? Because he's an innovator. He believes in his football, plus the fact that he knows football as a player as well, bro. A lot of things go into it. Obviously, he's a good student of the game, or communicator is important. All those things come into it. Why everyone complain when he is not even La Liga player of the season and came 9th in La Liga top scorer? Again, there are two sides of the coin always, भाई. कंप्लेन करना फितरत है भाई लोगों की, क्या कर सकते हैं. हम इतना अच्छा काम करेंगे तो हार्डली 2 people आउट ऑफ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर 13,300 लोग प्रेज करते हैं. लेकिन हम बुरा करेंगे ना, कुछ बुरा बोलेंगे ना, वो 2 बन जाएगा 200. दैट इज व्हाट इट इज, ब्रो. दैट इज लाइफ. अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए. आई एब्सोल्युटली हियर यू, बट फिलॉसफी नहीं देकर ये बोलूंगा द विनीशियस जूनियर कैन नॉट से दैट रॉड्री डिड नॉट डिजर्व, बट एट द सेम टाइम इफ सो नो whoever is leaked कि विनीशियस जूनियर जीत रहा है बैलन d'Or, उसको ब्लेम मिलना चाहिए, इफ आई एम ऑनेस्ट.
जो पहले लीक किया था। फिफ्थ प्लेस फॉर टॉप 4 लीग कैसे डिसाइड होता है फॉर चैंपियंस लीग? कोई यूएफए कोएफिशिएंट्स, दैट इज व्हाट इट इज। अगेन फॉलो आवर चैनल क्लोजली, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन हम वो भी कवर करते हैं वीक इन वीक आउट। एमरम विल डू या हिज बेस्ट टू गेट यूनाइटेड बैक ऑन ट्रैक, बट रैशफोर्ड सब न्यूट्रलाइज कर देगा। अरे यार पुलिस कैस चेंज द गेम, हाँ यू मस्ट से, लेकिन मोराटा ने फाउल दे दिया यार, हट। Patience is needed, but how is Flick and Slot success too early? Do you think it's sustainable or they will eventually come down? No, there's a difference. Flick has taken over a team which won La Liga 18 months ago. Flick का जो process था ना, trust the process. Javi was in the period of bad phase. Let me explain you. लोग बोल रहे ना, why is Pep? Someone asked in the chat, why is Pep so successful? Frank Rijkaard doesn't get the kind of, say, backing or probably just the hype that he deserves mid 2000s के लिए। काफी दफा उसने बनाया था वो फिलॉसफी, एंड देन पेप काइंड ऑफ बिल्ट ऑन इट। वही सेम चीज फ्लिक ने किया है, व्हाट जावी इज डन, Tuchel did what Lampard did. Surprisingly, I'm saying that, but that's true. But also Slot what Klopp did for sure, more so. तो there's a difference. Liverpool were fighting for the title 3 महीने पहले तक, लास्ट सीजन में। देन फ्लिक बार्सिलोना, यस ट्रांजिशन सीजन अगेन था, लेकिन जनरली यू वर इन द नॉकआउट्स ऑफ द चैंपियंस लीग, आप 18 महीने जीतते हो लीग पहले। पोलिटानो बाय द वे कमिंग ऑफ गाइस, या इट विल बी गुड वन गाइस, सीरियसली 1100 लाइक्स भी नहीं हुए, कम ऑन गाइस, doesn't take a buck, everyone hit that like button, definitely helps। ज्यादा टारगेट नहीं रख रहा हूं भाई, I just keep around 1/10 the people watching generally the target, लेकिन it should be 1/5 to be honest, but कोई नहीं। who will replace Amorim next year? naughty boy हर्षा ब्रो, बिग अप। रॉड्री doesn't deserve the hate, या अगेन रॉड्री को क्यों मिल रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि फ्रैंक रायकार्ड ही था ना उससे पहले, pretty sure Rijkaard was before, या फ्रैंक रायकार्ड ही था यार कोच। although Rijkaard also had some very bad moments, but Rijkaard ने बहुत अच्छी चीजें भी किया था। मतलब फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, Marina Granovskia got a lot of, I know it's a different thing altogether. Like Marina Granovskia got a lot of credit for what she did at Chelsea. But honestly, Michael Emenalo should get a lot of credit as well, क्योंकि उसने वो बनाया था, बीजा था बोझा था बीज। क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता भाई, 2:45 सुबह के, समझ जाओ, इशारा काफी है। Imagine losing the Ballon d'Or and going to Mestalla away, going to be brutal. I'm going to enjoy this. By the way, it's 2 back-to-back away games. Mestalla away as well as San Siro away. And I think Milan are getting beaten there as well. Early prediction. बिल्कुल यार, बिल्कुल। ETH really made United a meme. Everyone is making fun of them. होता है भाई, हमारा भी सेम चीज हुआ था। मुझे याद है बेनिटेस के अंडर हम बन गए थे यार वो साल, आई कांट फॉरगेट मैन। I don't know how we lost that Club World Cup final. Till today, I will never forgive Benitez. और वो Swansea के साथ 2-legged. We lost उस समय कार्लिंग कप हुआ करता. We lost a 2-legged. I repeat, 2-legged semi-final against Swansea City under bloody fat. So sorry for fat shaming, but I really hate that guy, man. Rafa Benitez. Sorry, Liverpool fans, for Chelsea fans. If you're a Chelsea fan, you understand मैं क्या बोल रहा हूँ. The guy actually made us lose a 2-legged semi-final of the Carabao Cup against Swansea City. Yes, Hazard kicking the ball, but it didn't help. But surely we should have beaten that team, with all due respect. Or Corinthians, was it? Club World Cup final में? Cannot forget, brother. ETH का वही सीन है. Certain matches, मतलब he got embarrassment to Manchester United fans. On the right-hand side, Napoli, cross and far post में I think it's gone out of place. Slot still have a squad built by Klopp, but Flick is doing it with Casado and La Masia kids. Yes, that you have to give it to Flick. Lekin that's Flick. That's a coach in you. Flick is a proper coach, ना? एडगर डेविड्स को लोन पे ला के टॉप 2 फिनिश करवाया था। मैं बोल रहा हूँ ना आप लोग को भाई, सर्टन मैनेजर्स, मैं बोलता हूँ लुई वैन गाल,
अब यहाँ पर बारसा फैंस दिख रहे हैं मुझे, इसलिए मैं बार बार एक पॉइंट बोलता हूँ। लुई वैन गाल, लोगों को पता ही नहीं व्हाट काइंड ऑफ मैनेजर हिस्ट्री ही हैज भाई। अपना एक और बायन का मैनेजर कौन था जो ट्रेबल जिताया था, मैं उसका नाम भूल जाता बार बार यार। he deserves a lot of credit, man. Yeah, with all due respect to Rafa Benitez, we won the Europa League. लेकिन वहां पर भी अगर ब्रानिस्लाव इवानोविच ने वो लास्ट में हेडर नहीं मारता और टॉरेस wouldn't have gotten that goal, I don't think tactically we were better in that team, in that game Benfica के against, to be honest. I remember watching that. But ठीक है, he was a manager after all. Yeah, but Valencia और रियल मैड्रिड का रहता है ना कुछ हमेशा। Oh yeah, Benitez was brilliant यार वहां पर। देखो Benitez as a manager is brilliant, but for Chelsea we hate him, bro. Simple. Just like Thibaut Courtois as a player is awesome, but we say this. Still, we have more Club World Cup than Arsenal or Spurs put together. Who will replace Amorim in Sporting? I don't know. मतलब they might, अगर जोसे अवेलेबल रहता ना, they would have got tempted, I guess, for Jose. लेकिन you know what, it's a good project, bro. पता नहीं, मतलब Sporting, I hope Gyökeres doesn't leave, bro, इस साल। UCL में they are flying। पता नहीं, मतलब स्पोर्टिंग का जो सिस्टम है और जैसे प्लेयर्स है, समवन लाइक अ कॉन्टे, जोजे, सिमियोने, टूकल, दैट काइंड ऑफ मैनेजर एकदम टॉप लेवल का, नहीं तो दे विल नॉट गेट अ टॉप लेवल मैनेजर फॉर ऑल वी नो। पता चला क्लॉप आ गया मैनेजमेंट में वापस। लियाओ गेटिंग इट फ्रॉम चुक्वेसी, लियाओ बीट्स हिज मैन, नाइस नाइस फ्रॉम लियाओ, लेकिन क्रॉस इजीली डेल्ट विद बाय नापोली। टेनाग पहले ही सैक हो जाता, वी वेटेड एज वी डू नॉट हैव अ रिप्लेसमेंट देन अगेन, बट लेकिन इतना जल्दी आपने कर लिया है, आई एम वेरी सरप्राइज्ड आफ्टर द अनाउंसमेंट। बिल्कुल जावी को क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स फिर भी दैट ही इज स्टिल मैनेजिंग, लाइक फॉर एग्जांपल Lamine Yamal was a Javi player, right? Wasn't Lamine Yamal introduced by Javi? क्रॉस आया भाई, नाइस क्रॉस, नो वन वाज इनसाइड द बॉक्स क्लोज इनफ। चुक्वेजी क्रॉस वापस से, Napoli deal with it easily. Fofana shot, good structure, Rahmani just about defending it, कुरत के लिया, nice body work by Fofana, कौन था साला, ये क्या दे दिया यार। ओ भाई रेड कार्ड चेक किया क्या? Across London, that Benzo Maresca will be taking us to new height, but will the board back him? Guys, take your time, man. Don't jump अभी। यप हाइंकस, या थैंक यू ब्रो। यप हाइंकस का नाम भूल गया भाई। 3 बजे सुबह वॉच अलॉन्ग करते ना, यही होता है आफ्टर स्ट्रीम ऑलरेडी ऑन द अदर चैनल। लेकिन यहाँ पर ही यूज हिज आर्म, आई गेस, और इज इट कुछ नहीं हुआ, चलो नो रेड कार्ड। Amorim's primary job is to take some really tough decision and remove players who are not good enough. Rashford, Bruno, or both are going next summer. I don't think Bruno is going anywhere. I'll be really shocked if Bruno goes. I think Bruno will be there. I'll be really shocked. Yes, Bruno का body language doesn't say that. Recent red cards don't say that. लेकिन Bruno, Ugarte are very crucial in the system. वेरी क्रूशल इन द सिस्टम। आई थिंक अगर आपको माइनो को खिलाना है, आपको ब्रूनो और उगाटे को खिलाना पड़ेगा। ब्रूनो स्लैश माउंट भी बोल सकते हो, लेकिन माउंट अभी के लिए यू कैन नॉट बैंक ऑन हिम, राइट? कैन यू? पाउ कुबारसी भी जावी ने इंट्रोड्यूस किया था, देखो। या जावी ने इंट्रोड्यूस किया था, एग्जैक्टली। टू बी ऑनेस्ट, मतलब आई नो कि वन वुड से कि probably giving Xavi credit for Gavi and Pedri is too much, but I would also do that. आपको याद है तो पेड्री हैड दैट क्रेजी सीजन जहां पर हर एक गेम खेल रहा था लिटरली। गावी हैड अ क्रेजी सीजन, बट देन देयर वाज अ टाइम जब आप बोलोगे कि मेजॉरिटी हियर दे हैव प्लेड फॉर जावी। रूड वैन निस्टेलरॉय, नहीं, मे बी, इज इट अनाउंस्ड? आई डोंट थिंक सो। लेट्स वेट एंड सी। रूड वैन निस्टेलरॉय डेफिनेटली विल बी useful, I think, क्योंकि manager coming from a different league, Ruben Amorim knows Manchester like anything. Kvaratskhelia getting subbed off, guys.
Shaw, bhai. Actually, Shaw, if he's fit, again, if and but say Malasia and Shaw might actually work in the system. I genuinely believe it. चलो भाई, नेरिस आ गया है एंड लुकाकू इज ऑफ एज वेल. सिमियोने आ गया है भाई, स्ट्राइकर सिमियोने. डेविड नेरिस ऑन द विंग्स, लाइक फॉर लाइक सब्स्टिट्यूशन. लुकाकू ऑफ, क्वारेस के लिए ऑफ. क्या यार, नापोली आराम से फ्लाई कर रही भाई लीग में, और पॉलो फंसेका बहुत ही एवरेज मिड टेबल मैनेजर है ब्रो, सीरियसली पिसिंग मी ऑफ. ब्रूनो हैज गुड रिलेशंस एमरन में. हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ, ब्रूनो विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. People like Bruno and people who like just know Portuguese, etc., will be important. He's still a young manager after all. Thoughts about upcoming 2025 World Cup? I'm looking forward to it. Chelsea, 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 Chelsea. By the way, कल रात को मैं खुश था बहुत ज्यादा for MISOP. लेकिन हाँ, jokes apart, I think unnecessary to have so many teams. लेकिन I'm happy that we are at least having that. Thoughts on Zirkzee, Harsha, we discussed in detail. I genuinely believe the guy is having good potential. Only thing is he's not a proper number 9. जो मैंने बोला था in the beginning of the season, हमने बहुत लोगों ने चैट में भी बोला था that they needed a number 9 as well. Hoyland पर डिपेंड करना बहुत ज्यादा, बहुत not be right on especially Rashford. अभी बोले द यूनाइटेड जॉब इज द टफेस्ट इन द वर्ल्ड इन माय ओपिनियन. टू मच एक्सपेक्टेशन एंड टू लिटिल टू वर्क विद. आप अगर मेरा वीडियो देखो जो कल सुबह मैंने रिलीज किया था, दैट इज माय होल पॉइंट. दैट इट्स one thing to say कि a manager comes with a certain set of wins, certain number of average points per week, certain gameplay दिखाता है, he has a fighter, he is a winner. और एक और चीज है doing that in England. कुछ नहीं, इंजर्ड है भाई, इंजर्ड रहा है तो फेयर इनफ. पेड्री इज मोर कॉमन बट गावी यस. या पेड्री इज ज्यादा कॉमन है, फेयर पॉइंट. नेरेस्ट इनफैक्ट फर्मिन लोपेज ऑल्सो. जावी को ग्रेड लेना पड़ेगा भाई फर्मिन लोपेज के लिए, डेफिनेटली. प्रीटी श्योर फर्मिन लोपेज, जावी ऑल्सो. जावी नहीं, हाँ जावी ने किया था भाई इंट्रोड्यूस. अगेन प्लेयर का भी क्रेडिट है फॉर श्योर. नेरेस्ट लुक लाइक इज ऑलवेज हाई. बेचारे को उसकी वही था ना जिसकी चोरी हो गई थी एक्सेट्रा. बॉब फेल सैड फॉर दैट स्टोरी ब्रो. भाई विनी वाज रॉब्ड, इतना कंट्रोवर्सी क्यों है? विनी वाज रॉब्ड इन टर्म्स ऑफ इंसल्टिंग हिम बाय बैलन डोर और बाय द जर्नलिस्ट हु लीक्ड आउट रॉन्गली. मे बी द न्यूज वाज करेक्ट, तो वो जर्नलिस्ट आर एट फॉल्ट डेफिनेटली. और रॉब्ड इन टर्म्स ऑफ जस्ट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. लेकिन आई डोंट थिंक यू कैन से कि रॉड्री डिड नॉट डिजर्व. कैन वी रियली से दैट? अगेन इट्स एन ऑनगोइंग डिबेट, बट ठीक है, आई डोंट केयर. जावी मेड बिलीव क्लब बिलीव इन ला मासिया अगेन. लमीन कुबारसी, बाल्डे भी भूल गया यार. एग्जैक्टली, बाल्डे भी भूल गया. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब इनफैक्ट मतलब ये भी बोलना चाहूंगा, इन द बैक फोर, आई डोंट नो व्हाई बारसा फैंस, विद ऑल डू रेस्पेक्ट टू ऑल, in all these talks, I know आपका बंदा नहीं in terms of academy, it's our player, but Christensen never gets a... Ooh, almost goal आ गया, एक सेकंड. भाई क्या हो रहा है? Zomboing is almost scored against Milan third. लेकिन हाँ, क्रिश्चियनसन को जनरली इतना नहीं मिला है. मतलब आई एम जस्ट वंडरिंग दैट सीजन यू वन द लीग ही वाज वेरी क्रूशियल. लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत चेल्सी बैस ला रहा हूं मैं. जग्जी, आई डोंट सी हाउ Amorim can use him. He can. It's not necessary, again I repeat, it's not necessary. हम assume कर रहे हैं that he will play exactly the same जो Sporting में खेला है. No, not necessary. Up until January he might play based on the personal जो available है, जो फॉर्म में है, जो फिट है, जो सूट करता है प्रीमियर लीग according to him, which was different for Thomas Tuchel. Despite him playing 4-3-3, change किया था 3-4-2-1 गया था for Chelsea. You want to make a structure, he might go 3-4-2-1 for Manchester United for all we know. मुझे लगता है he might go 3-4-2-1 and where, और 3-4-1-2 जहां पर जर्गजी फिट हो सकता है. Conte और Tuchel types. Milan losing today making Napoli contenders, and although Napoli have tough matchups coming up. हाँ, थोड़ा बहुत देख लेते गाइस यहाँ पर टेबल एक्सेट्रा. लेकिन ऑनेस्टली इट्स अ रबिश परफॉर्मेंस ऑफ मिलान, एब्सोल्युटली रबिश. जय इन द हाउस, क्या हाल है भाई? ऑल गुड. यहाँ पर देखो, मतलब पॉजिटिव्स कुछ भी है मिलान का आज, कुछ भी. सीरियसली देयर इज नथिंग ब्रो, एब्सोल्युटली नथिंग. मलिक तियाव मे बी,
उसके मिस्टेक्स नहीं थे इतने। पैवलोविच को कैसे रेटिंग मिला है उसको इतना पता नहीं, आई हैव नो ब्लडी आइडिया, सॉरी football.com। लेकिन पुलिसिक ऑफ द बेंच इंप्रेसिव लगा एट बेस्ट, थोड़ा सा राफेलिया एज वेल, बट दैट्स इट, डिस्पाइट नॉट बीइंग द बेस्ट माइंडसेट और फिजिकली। बट यू हैव टू पुट द क्वेश्चन अगेन, वो ऑफ साइड मोमेंट मोराटा का नहीं आता तो अलग होती चीजें हो सकता है, लेकिन दैट मिडफील्ड लॉफ्टस चीक और मूसा हैवंट हेल्प्ड फफाना इनफ। पता नहीं कैसे उनको रेटिंग मिला इतना, आई हैव नो आइडिया। बट अगेन अगर आप देखो यहाँ पर तो नो वन कैन आर्ग्यू द फैक्ट इज कॉन्टे Conte's teams are one of the best counter-attacking teams that you see in football in modern day, for a reason, for a reason, and they are top of the league. टेबल देख लेते जल्दी से क्या हो रहा है, यूवेंटस के बात हो रही थी ना, चलो भाई 8 पर ही बैठे अभी तक। क्विकली मैं कमेंट्स ले रहा हूँ, बाकी गाइस डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। Do you think the new manager bounce is enough for United to defeat Chelsea? I don't think so. Again, it's anyone's call, lekin I think it may be enough for you to get a point if you are a Manchester United fan. I don't know. बोलिए आप, ये क्या है? Did real? Ooh, just over the top, भाई, Rafael का shot. Yeah, he's too much injured. वो हमेशा का problem है. I want to know your opinion about did Real Madrid do the right thing by boycotting Ballon d'Or? Yeah, I can see why they did that. Is it the right thing? If you are being neutral and saying no, it's not the right thing. You should respect the trophy and maybe after that आपको एक press conference कराना था, maybe, and वहां पर आप बोल सकते थे publicly if you wanted to do that, rather than एक मतलब यहाँ पर फूफा जी बन गए basically, if you know what I mean. शादी में जो फूफा जी होते हैं ना वो बन गए रियल मैड्रिड. It was not necessary. It was थोड़ा सा, लेकिन they took it personally. Why? Because they felt insulted and disrespected. So I can see why it happened. एंचेलोटी बहुत कम होता है वो, लेकिन हुआ है ना. हाँ, उस सीजन के लिए बोल रहा हूँ. He doesn't get enough praise. At least generally what I've observed. NOA pushed me, what's wrong with AC Milan? Right now, everything, bro. How do you think Tuchel used the Lampard Chelsea squad mid-season and made them European champions? Do we have a decent shot in Europa? Absolutely, you should have a decent shot in Europa. Yes, 3 draws, but lucky Manchester United, not just for winning against the drunk Man City squad in the final of the FA Cup. लेकिन आप लोग ने अच्छा भी खेला. You have to give to Rashford and Bruno and Maino in that game. But I have to say कि लकी क्यों बोल रहा हूँ. यूरोपा लीग का फॉर्मेट ऐसा है कि 8 गेम है, तो 5 गेम अभी भी बाकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के, तो यू आर गुड. डोंट यू वरी अबाउट इट. ऐसा नहीं कि आपने 3 हारा है. जावी मेड द मोस्ट क्रूशियल चेंज इन हिज टीम बाय प्लेइंग कुंडे राइट बैक. वो तो आई थिंक फोर्थ था एट वन पॉइंट, मुझे याद है ट्रांसफर में, मतलब हिज हैंड्स एंड लेग्स वर टाइड एंड समहाउ कन्विंस्ड कुंडे और अराहो को, इफ यू रिमेंबर अर्ली ऑन स्वैप भी करता था दोनों को अर्ली ऑन. चुकवेजी on the right wing, cutting in, गोल होना चाहिए. नहीं यार, how did we miss? What a miss! पुलिसिक मिस भाई. ये तो वही लगा भाई कैरेबो कप फाइनल, इफ यू रिमेंबर अंडर टूकल, जो पुलिसिक ने मिस किया था. What a miss! Come on भाई, leaning back, that should have been a goal. That should have been a goal. I hope it doesn't go to extra time तो है नहीं. I hope it doesn't go to penalties, or I hope we win. लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है penalties जा रही है. I don't know why. And then it's a lottery. I genuinely believe, obviously मैं चेल्सी को ही बोलूंगा we'll win of the penalties, and Jorgensen मे भी दिखा दे कि penalties में भी हीरो बन सकता है. But I have a feeling penalties जा रहा है. Score draw, then penalties is what I'm saying. But I hope and pray I'm wrong and we dominate easily and heart attack FC नहीं बने. जहां पर by the way हम जुड़ने वाले वापस से, do not forget to join us. Of course और matches भी होंगे तो we'll follow them as well. I remember every hour run from right back I was scored. बिल्कुल, I remember those games. मुझे याद है एक प्री सीजन गेम था रियल मैड्रिड एल क्लासिको, बेसिकली प्री सीजन था यूएस में. व्हाट अ गेम ब्रो. I remember we covered on this channel. Brilliant गेम था वो टू वॉच. रूडिगर ने स्कोर किया था जहां तक मुझे याद है. रूडिगर का डेब्यू गेम था क्या वो, समथिंग लाइक दैट. ही प्लेड लेफ्ट बैक एंड देन ही वाज शिफ्टेड टू राइट सेंटर बैक. एंचेलोटी ने इनिशियली वो भी ट्राई किया था अगेंस्ट अराहो. आई रिमेंबर दैट.
सूरज बोल रहे वी नीड यूसीएल फुटबॉल सो दैट एमरम कैन बी बैक विद प्लेयर्स। आई थिंक इधर वेज आपको बैक करना चाहिए। आई नो स्पेंडिंग्स योर सेकंड हाईएस्ट आफ्टर चेल्सी, मैंने वीडियो में वही बताया था कल, लास्ट मतलब आफ्टर एरिक टेन हाग को अपॉइंट करने के बाद में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 250 मिलियन तो भाई अयाक्स को प्रसाद दे दिया ना। इफ यू नो लॉफ्टरची कमिंग ऑफ, कमार्दा कमिंग ऑन भाई, नाइस टू सी टीनेजर कमार्दा कमिंग ऑन। लॉफ्टरची सॉरी ब्रो, शुड हैव डन बेटर, नॉट बैड रन्स, लेकिन फाइनल थर्ड में नॉट इनफ, नॉट इनफ एज मच एज आई लव यू लॉफ्टर चिक। एंड भाई आई एग्री रॉड्री शोली डिजर्विंग, अगर सब फेयर था तो why did players like Frank Ribery, Mendy and one Wolves player, I forgot his name, are making fun of the award. Award is meant to be made fun of because ये award is a farce. मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, बैलन डोर इज अ फार्स। बैलन डोर का जो सिस्टम है ना, वोटिंग सिस्टम, वो गलत है। वोटिंग सिस्टम क्या होता है, आप अपने कोलीग को वोट करोगे भाई, आप पर्सनली जानते हो उसको, सबकॉन्शियसली आप प्रेफरेंस दोगे। बायस सबकॉन्शियस होता है, जानबूझ के नहीं होता है, समटाइम जानबूझ के भी होता है। ठीक है, सेकंड चीज ये है कि जो क्राइटेरिया है वो बहुत ग्रे एरिया में है, तो ऑब्जेक्टिवली रखो भाई। मतलब मिडफील्डर का रखो पर 90 नंबर ऑफ इंटरसेप्शंस पर गेम, हाउ मेनी नॉकआउट गेम्स हैव यू प्लेड, उसमें पर 90 क्या था, उसके लिए एक्स्ट्रा वेटेज रखो। मतलब इट शुड बी अ प्रॉपर चार्ट बेस्ड पॉइंट सिस्टम। और यस सब्जेक्टिव होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स का एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स, यू हैव एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट फॉर ट्रॉफीज, एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट फॉर मे बी फाइनेंशियल फेयर, जो बोलते हैं फेयर प्ले इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर एक्सेट्रा। आप अगर ज्यादा येलो कार्ड ले रहे हो माइनस पॉइंट्स करो, मतलब समथिंग लाइक दैट। एवरीथिंग शुड बी अकाउंटेड फॉर, क्योंकि खाली गोल्स और असिस्ट नहीं है गेम का पार्ट, इंपॉर्टेंट बट नॉट ऑल। लियाओ पुटिंग इट लॉन्ग फॉर अ गोल किक, क्या ही बोले यार। अराहो को विनी के अगेंस्ट डालता था, बाकी कुंडे है। यस यस दैट्स अ गुड पॉइंट। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट मैंने श्योरली देखा था। अब्दुल बोल रहे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मेरे ख्याल से इट विल बी इन गोल योर्गेंसन आज। फिर लेफ्ट बैक इन माय ओपिनियन कुकुरिया स्टार्ट, राइट बैक गुस्टो स्टार्ट, सेंटर बैक बार्डेशिल अलोंग विद ईदर ऑफ टोसिन डिसासी, वो वाला डिफिकल्ट है। मिडफील्ड में इन माय ओपिनियन काइसेडो शुड स्टार्ट, स्टिल न्यूकासल अवे, इट्स अ नॉकआउट गेम डिस्पाइट हैविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड वीकेंड में, अलोंग विद एंजो फर्नांडिस जो नहीं शुरू किया था द वीकेंड। And Cam would be Felix, right wing Sancho, left wing Mudrik, and striker up top Nkunku. This is what मैं बोल रहा हूँ। The funniest thing after the ceremony was Richarlison asking, yeah, Richarlison, bro, next level. Yeah, glorified beauty contest. Seriously, it is. Buy 100 lakhs नहीं है, seriously. Come on, come on. Minna in the house, क्या हाल है? Thank you, Ashutosh and others as well. Do you see Liao leaving Milan anytime soon? कहाँ जाएगा यार? अगर वो स्कूडेटो जीतने के बाद अगर दिखाता बैक टू बैक सीजंस में, यस हम चैंपियंस लीग में पहुंचे थे टिल द सेमीफाइनल्स, बट वी ऑल नो मिलान गॉट एन इजियर साइड ऑफ द ड्रॉ कंपैरेटिवली, दैट्स अ फैक्ट। एज मच एज क्वार्टर फाइनल्स के लिए तो वी वर डेफिनेटली डिजर्विंग, जहां पर नेपोली को आयरॉनिकली बीट किए थे, रिमेंबर सूरज। बट आई डोंट थिंक लियाओ आफ्टर दैट हैज शोन मच। लियाओ इन गेम्स यस, इन स्टैट्स यस, बट ही इज नॉट, मतलब लियाओ ना आज के मिलान में लियाओ शुड बी व्हाट हजार्ड वाज टू चेल्सी। जो लियाओ था, विद टू बी फेयर टू हिम, 1.5 सालों तक लियाओ था। आधा सीजन इन द चैंपियंस लीग, एक सीजन इन द सेरिया, ही वन अस द स्कूडेटो। यहां पर काउंटर पे नापोली स्कोर करेगी, लकीली मैन्योन को डायरेक्टली दे दिया। तो आई थिंक लियाओ नीड्स टू जस्ट प्रूव टू बी कंसिस्टेंट फर्स्ट बिफोर ही ट्राइज अगेन। मिलान के ऊपर व्हाट आर द ऑप्शंस भाई, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है ना मिलान के ऊपर, मतलब इफ यू वांट्स टू प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल, सिंपल। मतलब आप देखो मोस्ट ऑफ द टॉप क्लब्स हैव अ लेफ्ट विंगर स्टार्टिंग। कोमन खिलाता था प्रॉपर राइट बैक, अच्छा। पुलिसिक कटिंग इन, लेफ्ट फुट वॉली इन, बट टू नो अवेल, क्लियर्ड इजीली। नापोली का क्या डिफेंसिव स्ट्रक्चर है गाइस। मोराटा, ओ हेवी टच इन द बॉक्स, ब्रिटिश श्योर यहाँ फ्री किक जीत लेंगे। नापोली गेम्समैनशिप कर रही है, लेकिन नहीं, रेफरी वेल डन सेज टू कीप द बॉल एंड कंटिन्यू। पता नहीं यार, ये फोनसेका कर रहा है नशा तो, बेवकूफ साला, क्या 11 पिक किया आज।
पुलिसिक डायरेक्टली टू द गोलकीपर, इजी कैच। लियाओ को कितने में सेल करेगी मिलान? आई डोंट थिंक वी शुड सेल लियाओ। यस, ही कुड गेट इन लॉट ऑफ मनी, दैट्स अ गुड पॉइंट, लेकिन अभी भी लियाओ डज अ लॉट फॉर मिलान। ही इज जस्ट नॉट प्रॉपर वर्ल्ड क्लास लेवल वीक इन वीक आउट, वो मैं बोलूंगा। वो इश्यू है, तो वो आई थिंक बेटर नॉट टू रिस्क एंड जस्ट नॉट सेल हिम। बहुत सारे लोग हैं यार जो मिलान कैन सेल, ऐसा नहीं कि नहीं है। मतलब फॉर ऑल वी नो, टैमी मुराटा एज अ टैमी माइट गेट इवेंचुअली सोल्ड, आई जस्ट फील दैट। टैमी ऑन लोन है क्या वहां पर, बाय द वे? मतलब आप देखो सेंटर हाफ देव साइन पाव्लोविच, वी नेवर नो, देयर माइट बी टोमोरी इवेंचुअली मूविंग। लियाओ, ना ना, नो वे नो वे। सूरज बहुत उड़ रहे हो आज भाई, उड़ रहे हो, कोई नहीं होता है, आई गेट इट, यू आर एक्साइटेड दैट न्यू मैनेजर इज देयर। कहाँ यार लियाओ लेफ्ट विंग बैक, नो वे मैन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टू स्माइल इन एम्बैरेसमेंट ऑफ अ गेम। ओवर द टॉप बॉल, नापोली के लिए डेविड नेरेस इज देयर, कट बैक, शॉट बाय मैक्टोमिने, कैच बाय मेन्योन इजीली। खत्म करो भाई गेम को, अब लास्ट के 3 मिनट बाकी है अब तो। एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस ब्रो, एम्बैरेसिंग, सीरियसली एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस। अगेन एम्बैरेसिंग कॉल बाय द मैनेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैनेजर डिसाइड किया कि लियाओ की पर्सनल इश्यूज आर देयर, सो फॉर दिस न्यू और डाई 6 पॉइंटर हम उसको कर लेंगे भाई, हम मिलान है, आराम से घर पर ही खेल रहे ना। और पाव्लोविच को शुरू किया भाई, क्या ही बोले। आई वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग रॉन्ग विद रियल मैड्रिड ऑल ऑफ सडन। इट्स अ ट्रांजिशन ब्रो, उनको भी पता है कि एंचेलोटी का फेज इज एंडिंग, क्रूस हैज गॉन, तो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन दैट वी आर टॉकिंग यहाँ पर, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली भी है। और वन कैन आर्ग्यू दैट यस, रियल मैड्रिड स्टिल हैव ह्यूज बिग स्क्वाड, लेकिन बहुत सारे इंजरीज हुए उनके रिसेंटली, तो यू हैव टू गिव दैट लैक ऑफ मोमेंटम का रीजन, वो आई डोंट नो। और एम्बापे इज द मेन रीजन, दैट्स एक्चुअली ट्रू। दैट्स एक्चुअली ट्रू, वो ऑफसाइड खेल रहा है टक, rather than स्कोरिंग ऑन साइड। लेकिन जोक्स अपार्ट, आई थिंक एम्बापे के वजह से अटैकिंग प्ले में तो इश्यू आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि अटैकिंग में ज्यादा, आई थिंक डिफेंसिवली दे आर मोर वोफुल। या लेकिन इंटर मिलान विल बी अनहैप्पी विद दैट गेम, आई थिंक आफ्टर गोइंग 4-2, आई नो यिल्डीज वाज ब्रिलियंट बट 4 ऑल shouldn't have gotten to that. By Gilmore going off and McTominay as well, good performance as much as they are my opposition tonight. Season off nahi yaar, Real Madrid is Real Madrid, never underestimate them bro, in my opinion, never ever, trust me, never. That's what मैं तो बोलना चाहूंगा, बट हम क्या जानते हैं भाई। नापोली से अगर इस नापोली से जीत गया ना ये कॉन्टे, सीरियसली मैन, मतलब ही विल बी लाइक सेरिया का ब्लूप्रिंट। सेरिया जीतना है, अपॉइंट कॉन्टे, दैट्स ऑल। यूट्यूब मैन, YOUTUB, यूट्यूब। Yeah, obviously we don't make as much. Obviously we don't make as anywhere close as much. Just about surviving. लेकिन ठीक है. I have done various jobs in my career though. Various मतलब primarily I'm a software engineer turned staffing manager. जो I have worked for a good few years. लेकिन हाँ. Anyway, Real Madrid is alright next year. Mbappe, हाँ. Once they get the connect, maybe that's there. अरे, we are just football fans भाई. कोई पंडित वंडित नहीं, हम लोग भाई फुटबॉल फैंस है। यस, वी लव एनालाइजिंग बिकॉज़ दैट्स हाउ वी हैव लर्नड द गेम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आल्सो लव आवर क्लब्स एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर आई होप आई गेट अ गुड स्लीप बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। आज चेल्सी का मैच है, क्योंकि मिलान बहुत ही टॉर्चर की इस मैच में। ऑल्दो देयर वाज फेजेस ऑफ द गेम जहां पर हमने कंट्रोल किया है, बट श्योरली नापोली का स्ट्रक्चर मैन, कॉन्टे, आई एम जेलस एज एनीथिंग। पाव्लोविच, आई रियली डोंट नो व्हाई डिड यू इवन पिक हिम। चलो भाई, हो गया। I can't believe Napoli has gotten a cakewalk against AC Milan at the San Siro, and they had won 2-0 already in the first half.
आई कांट बिलीव इट। क्या ही कर सकते हैं हम इसका। लेकिन ग्रेट सेकंड गोल बाय क्विचा। क्विचा ग्रेट गोल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक गोल, कांट बीट दैट। यू हैव टू गिव देम क्रेडिट वेयर इज ड्यू। और लुकाकू भाई बुलडोज्ड पैव्लोविच, बुलडोज पैव्लोविच। और भाई यंग लेफ्ट बैक भी था मिलान का, बिकॉज अपना सस्पेंशंस थे। लेकिन डिस्पाइट द सस्पेंशंस, डिस्पाइट द स्लाइट इंजरी टू पुलिसिक, द मैनेजर डिसाइड्स नॉट टू पुश लियाओ टू स्टार्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द मैनेजर डिसाइड्स पैव्लोविच को शुरू करे। आई डोंट नो व्हाई। Malik Thiaw only positive of the night, if at all anything. Maybe Fofana to some extent. लेकिन going forward, Loftus-Cheek decent. Morata का offside गोल आया था. I get it, but surely not enough. Surely not enough. मतलब your AC Milan at home when you're 8th in the table, आप हार रहे हैं और you're allowing midfield of Zombo Anguissa, Billy Gilmore और McTominay to dominate. Really? डोमिनेट एज इन वो कंट्रोल कर रहे थे डिस्पाइट मोर पोजीशन एक्सेट्रा। मिलान डजंट मैटर, वो कॉन्टे की टीम है। आपको समझना पड़ेगा भाई। फोंसेका सीख जाओ भाई फुटबॉल, सीख जाओ भाई फुटबॉल सीरियसली। एक मिलान डाबी के बाद में खुशी दे दिया था, बट नाउ अगेन इट्स बीन अ वाइल ब्रो। मिलान अपार्ट फ्रॉम द स्कूडेटो ईयर ना, वो खुशी नहीं हुई है एज someone who has have a soft corner for Milan, having seen the best of Milan honestly, early 2000s mid 2000s में। लेकिन कोई नहीं, disappointed is part of football। नहीं यार अभी क्या बना, बहुत टाइम लगेगा यार। नो वे। ये क्या, अरे कोई नहीं, टेंशन नहीं है। लेट्स मूव आउट दैट बैलन दो टॉक्स भाई, हो गया बस। मैन ऑफ द मैच गाइस, एवरीवन, हु इज योर मैन ऑफ द मैच? Everyone in the chat बोलिएगा। मतलब क्विचा for the second goal which was the difference maker at the end of the day, और what a quality goal one can argue। या मे बी डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो उनका था, आई डोंट नो। जोम्बो अंगीजा बिकॉज उसका असिस्ट भी था, बेबी बिकॉज डिफेंसिव मिडफील्ड भी काम करता है। यस, आई थिंक जोम्बो अंगीजा प्रॉब्ली गेट्स इट, ऑल्दो लुकाकू एंड क्विचा बहुत अच्छे थे इन द फर्स्ट हाफ। और टू बी फेयर टू एसी मिलान, दे डिड गेट अ फ्यू शॉट्स व्हिच वाज सेव्ड बाय एलेक्स मेरिट। बट ठीक है गाइस, डी लोरेंजो भी अच्छा था, गुड पॉइंट। बट कोई नहीं गाइस, कंग्रेचुलेशंस टू नापोली फॉर विनिंग सेरिया ऑलरेडी, मिल गया आशुतोष द्वारा। लेकिन बिग अप्स टू यू ऑल भाई, सब लोग लव यू ऑल नो मैटर व्हाट, यू नो व्हाट टू डू, हिट दैट लाइक बटन। लाइक सीखते हुए स्ट्रीम में बोल दीजिएगा। इफ एनीवन इज नॉट लाइकिंग द स्ट्रीम, लेट मी नो व्हाई। वी आर हियर नो मैटर व्हाट, always open for feedback। bottom line of the description has our contact information। अगर आपको करना है डीएम करे, आई वुड लव टू chat with you। but always remember, we are here daily, be it on Almighty Blues या Almighty Sports, be it live या a video। so hit that bell icon so that आपको पता लगे whenever we are live, because you will miss some fantastic content। because especially tonight, आज later tonight, that is Wednesday night, Thursday morning, वापस से है गेम्स, और चेल्सी न्यूकासल अवे तो है ही है, बट ऑल्सो अदर गेम्स ऑफ कैराबो कप एंड अदर्स जो हम कवर करेंगे ये। चलो गाइस, लव यू ऑल, no matter what, Forza Milan and up the Chels, but it's a fan channel for all to see। Congratulations बोल देते for the winners, and we'll come back, maybe we'll also come back उससे पहले live talking about Amorim Tactics in a video। ठीक है, तो check out। और Almighty Sports में बवाल हुआ था आज एक stream, do not miss out that, you will love it, trust me। Bye।